We are live. वालमुकुंद पहले गपशप है और तू मोनोमीटर साथ मिलेगा। कैमरा ऑन कर ले, ठीक है? हाँ, एक मिनट। 2-3 इंट्रोडक्टरी स्टार्च कोड भी, ठीक है? ओए का पैटर्न वगैरह सब यहाँ पर है, ठीक है? ठीक है, तुम लोग अपना ये करते हो, ठीक है? 2-3 मोनी लाइव है, लाइव है। We are live, I guess. 32 people are watching. If we can, yeah. If you can hear us, please say yes in the comment. Yes. Okay. 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 Let's start in 8:15. Let others join. আচ্ছা, লাইভ স্ট্রিমের লিংকটা দিয়ে দিস। Holding button. ঠিক আছে, একটা পেজ Opening. Okay. How many viewers? 83. I guess. We'll start in 8:15. Tell everybody to join. No, ये अलग से highlighted होगा देखो इस time.
So I guess we should start right now. So basically, after a long period of time, we are back, and there was like in Jadavpur, there was all kind of fest going on, Srijan, Sanskriti. Because of that, we couldn't organize sessions like this. So, anyways, after a long time, we are back. So now today, as because we have missed 2 weeks, that's why we are targeting 4 companies today. We'll be starting with Gupshup, then we'll be moving on to IDFC, then Oracle, and we'll conclude with Deutsche Bank. So let me introduce you to our speakers who will be covering Gupshup. Actually, they have cracked Gupshup. So Balmukund Bhaiya and Anamitra Bhaiya. Hello. Hello everyone. Good evening. So I would request Kunal Bhaiya to slides. Yeah. Cool. So what was the OA pattern of Gupshup? So if you two guys can put some light on that. So okay. I'll do. Should I speak? Yeah, yeah. Okay. So the OA for Gupshup was OA consisted of only one question, which was basically more of a design-based question rather than a data structure or algorithm-based question, in which the question itself was to design the card game 29 itself. So basically, the game 29 consists of 8 rounds. So for each, there would be four cards played, and then we have to decide which player is the winner of that round, given using the information given. So that itself was a question, and initially we were given 2 hours in the morning, but then they were kind enough to let the other candidates try after Yeah, the was I uh, with you? initially three. Nita. Okay, yeah. Initially it was three. Then after the lunch break, they let us try that question again, and those who passed all the test cases were allowed to sit for the next interview rounds. Yeah, like if you research for the OA questions on internet for on GFG and LitCode, like as you can see on the screen, you will see that there will be like many will say that there will be Java based questions like concurrency and multi-threading and all, but we were like we can't do this because Java आता ही नहीं है. मतलब many people do in Java and many in C++ and बहुत सारी चीजें हैं. So we researched that things. I felt like not even going for the OA क्योंकि उस दिन हम लोग का राखी था. So we were like कोई नहीं देने जाते, बट लाइक अब रेडी तो हो चुके थे तो लगा चलो जाके इधर ही देते हैं कोई. अब गए तो वहाँ पे वही सिंगल क्वेश्चन था यहाँ पे. तो जैसे ये उन्होंने तो बताया देयर वाज अ सिंगल क्वेश्चन ओनली, उसमें पूरा डिजाइन का ही था. अब बाकी तो जो 3 घंटा मिला उसमें ही सब करना था. उसके बाद भी बट वहाँ पे है कि तुम्हारा कंसिस्टेंसी चेक मतलब तुम्हारा पेशेंस चेक किया जाता है. ये 3 घंटा बाद बोला गया था कि मतलब एक्सटेंडेड टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था. बोला कि जिन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो अपना ईमेल आईडी बता दो और वो लोग वापस बाद में वापस कोई दे सकते हैं. तो बाद में जो लोग को लगा कि वो लोग से क्वेश्चन बन सकता है वो लोग रुक गए. बाकी वही करना चाहिए. अगर तुमको लगेगा कि तुमसे क्वेश्चन बन सकता नहीं भी बन सकता तो एटलीस्ट रुक जाना चाहिए. क्योंकि ना कोई में यही होता है लोग फ्रेंड्स से तो हेल्प लेते ही ऑब्वियसली. तो किसी ना किसी से हेल्प लेके वो मतलब क्वेश्चन निकल ही जाएगा. और मल्टीपल टेस्ट केसेस पास करने का था ऑब्वियसली. मेरा भी मल्टीपल टेस्ट केस पास हो गया था इनिशियल 3 आवर्स में. तो आफ्टर द लंच में इंटरव्यू को कॉल आ गया था और उसमें वही कार्ड्स वाले गेम था जिससे बोला गया कि कार्ड्स अलग अलग गिवन है कि सबको कार्ड दिया हुआ है और कुछ कुछ कंडीशंस गिवन है कि इस हिसाब से ये प्लेयर चलेगा उस हिसाब से उसको पॉइंट्स मिलेगा. तो वो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत लोगों को 1 घंटे तक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था. मेरे आसपास जो लोग बैठे थे फ्रेंड्स लोग बहुत लोग थे वो लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया.
तो उसमें मेरे को कार्ड्स खेलने का फायदा हुआ, क्योंकि ये गेम मेरा खेला हुआ था, तो इंस्टेंटली मेरे को ये क्वेश्चन क्लिक कर गया कि हाँ ऐसे ऐसे बनेगा। तो मैं बगल में आधे घंटा पहले फ्रेंड्स लोगों को समझाया कि क्वेश्चन ऐसे होगा, तो उसमें फायदा ये होकर गया कि क्वेश्चन ये मैं गेम खेला हुआ तो उस चक्कर में क्वेश्चन बन गया। बाकी Yes, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। yes. Until and unless you are familiar with 29 card game, then it's um, if you're not familiar with it, then it's a little bit difficult to Very grasp. difficult to understand. Yeah, it's very difficult to grasp. कि what is a trump card गेम or भी what is समझना है, उसके बाद लाइक उसके बाद क्वेश्चन भी करना है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट। या नेक्स्ट लाइक आप लोगों को इंटरव्यू कॉल शाम को आ गया था, इंटरव्यू लाइक कितने राउंड्स थे इंटरव्यू में? टोटल 5 हुए थे मेरे तो, और मैं तो तेरा हमारा मेरा तो 4 ही हुआ था लाइक सो 2 टेक्निकल हुआ था राइट, फिर उसके बाद वीपी का राउंड हुआ, फिर एचआर का राउंड हुआ। आई थिंक दे रिड्यूस द नंबर ऑफ राउंड्स लाइक एज द टाइम स्टार्टिंग में देयर वर मोर नंबर ऑफ राउंड्स, बट एज टाइम पास बाय उन लोगों के पास टाइम बचा नहीं था, तो लोग नंबर ऑफ राउंड्स रिड्यूस कर दिए थे। मेरा जैसे 3 टेक्निकल राउंड हुआ था, एक वीपी राउंड हुआ था और लास्ट एक एचआर राउंड हुआ था, टोटल 5 राउंड्स हुए थे। नेट पे अगर आप सर्च करेंगे गपशप के बारे में, वहां पे लिखा है कि सिंगल राउंड ऑफ इंटरव्यू है। it depends on the placement. इसके कॉलेज वैरी करता है, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस सब वैरी करता है। या वो सब चीजें हो जाती है। तो टेक्निकल राउंड 1 में आप लोगों से क्या पूछा गया था? टेक्निकल राउंड में उसमें मतलब डीएसए पूछा था, फिर डीएसए में पूछा था how to find if a subarray of some zero exists or not. So like cheat code medium type questions, right? Yes, Not yes, too much difficult. yes. Okay. लीड कोड इजी टू लीड कोड मीडियम, सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे थे, मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी पूछे थे। और सबसे पहले में मतलब फर्स्टली था कि तुम ओए का क्वेश्चन समझना, वो लोग बोले कि ओए का क्वेश्चन एक्सप्लेन करो कि तुम क्या समझो ओए का क्वेश्चन में। मतलब उसमें तुम्हारा ओए का अंडरस्टैंडिंग लेवल भी देखते हैं कि एक्चुअल में तुम क्वेश्चन समझ रहे कि नहीं, खुद से सॉल्व किया कि नहीं, या फिर सिर्फ बस छाप लिया है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट पहला 15-20 मिनट, फर्स्ट 20 मिनट्स तुम पूरा उसको ओए का एक्सप्लेन ही किया कि ये क्वेश्चन था, हम इसको इस पैटर्न से अप्रोच किया। वो चीज जरूरी है कि तुमको ओए का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। मतलब अगर तुम छापे भी हो तब भी तुम्हें इंटरव्यू से पहले पढ़ के जाना है कि क्या आना चाहिए। हाँ, okay. हम नाम नहीं लेगा, मेरा एक फ्रेंड था साथ में, हम लोग को साथ में इंटरव्यू कॉल आया था, क्योंकि हम लोग साथ में ओए दिए थे। अभी फ्रेंड्स लोग में होता है, सबको पता है, सब साथ में देते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल साथ में आया था। वहाँ पे हम में जाके कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर रहे थे डीएसए कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो कैसे कर सकते हैं उसको, लेकिन क्वेश्चन फिर भी समझ में उतना नहीं आया था। वो बोला कि भाई मेरे को पहले वही का क्वेश्चन समझा दे। हम 20 मिनट बैठ के वहाँ पे उसको वही का क्वेश्चन समझाया। उसके कारण उसको भी फायदा हुआ, मेरा भी फायदा हुआ कि मेरा वही का क्वेश्चन रिवाइज हो गया। तो वहाँ पे जैसे ही अंदर गया, मेरे को सीधा बोला कि वही का क्वेश्चन समझाओ। अब हम जस्ट फ्रेंड को बात समझा के आया, तो मैं हम इजीली आराम से उसको 15-20 मिनट उसको समझाएंगे, ऐसे एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया पूरा। वो उससे खुद फिर डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस पे गया, और फर्स्ट राउंड सिंपल था, मतलब बेसिक डीएसए इजी टू मीडियम अगर तुमको आता है तो हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा पॉज लेते हैं, लाइव सेशन में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे तो वो क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है अभी तक? टेक्निकल राउंड एक्सपीरियंस तो वो तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्लीज लाइव चैट में लिखो, हम लोग भैया लोग को पूछेंगे। Someone is asking for the PDF. PDF that I will share. Okay. The slides that I will share. Was only brute force required or were asked to more optimizations? नहीं, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ब्रूट फोर्स टेक्निक से बता दिया था, उसके बाद फिर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच भी पूछा। मतलब नॉर्मल जैसे डीएसए राउंड होता है, पहले तुमको ब्रूट फोर्स बताना है, उसके बाद ऑप्टिमाइज करते चले जाओ। ना टेक्निकल राउंड में सिर्फ डीएसए क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट ना? या फिर सीएस they ask core questions. For me they asked questions from DBMS and OOPS as well, and they also asked whether I had an understanding about Java multi-threading and concurrency. Node projects were for me it was like a brief discussion. Is like what API have you used or what kind of projects have you done? That's it.
फर्स्ट राउंड में मेरे से कोई प्रोजेक्ट डिस्कशन नहीं हुआ. फर्स्ट राउंड में मेरा था खाली ओए का क्वेश्चंस एंड डीएसए लो इजी टू मीडियम. सेकंड राउंड में मेरा सबसे पहले प्रोजेक्ट डिस्कशन ही हुआ कि प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने की क्या बनाया, कैसे बनाया, तो प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ था. और सेकंड राउंड में इनको अलग अलग एग्जैक्टली डीएसए क्वेश्चंस नहीं पूछा गया. मेरे को जैसे गूगल में जैसे गूगल फोटोज होता है, उसमें सर्च गूगल फोटोज में मान लो तुमको एक फोटो ऐड की है, ठीक है, तो वो फोटो में जैसे होता है ना कि तुम अगर सर्च कर गूगल में सर्च कर लेगा क्रिसमस, तो उससे रिलेटेड जितने फोटो सब आ जाते हैं, या दुर्गा पूजा सर्च करते हैं तो वो उससे रिलेटेड जितने फोटो सब आ जाते हैं. तो ये फीचर कैसे इंप्लीमेंट होगा वो मेरे से पूरा एक्सप्लेनेशन मांगा गया था. फिर एक आप फोन सर्च में भी होता है कि जैसे अगर आप मान लो डायल पैड में नंबर लिख देते हैं 9653, तो जिन जिन नंबर्स में वो डिजिट्स कॉमन है 9653, तो वो सारे नंबर्स डायल पैड में शो हो जाते हैं. तो ये फीचर कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये कैसे होता है, वो चीज को एक्सप्लेनेशन पूछा गया. मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के बेसिस पे एक्सप्लेनेशंस पूछे गए थे. मतलब रियल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है हम लोग को उसके बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए. हाँ, कि मतलब बहुत सारी चीजें कैसे काम करती है, डायल पैड सर्च कैसे काम करता है, सारी चीजें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए. Okay. So, like, or let's say I have 3 projects on my resume. So, do they ask about? एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि let's say I have 3 projects on my resume. मेरे से तीनों के बारे में पूछा जाएगा कि सिर्फ एक के बारे में पूछा जाएगा? That depends on the projects actually, because for us actually I got to know later that the backend team came for a placement drive, so they were more interested in the backend stuff. So if you have a full stack project, or if you have a backend project, they will be more interested in those projects. And yes, and for me, I had a ML project in my resume, but in the first technical round, the interviewer didn't bother about it. He asked me about the other projects which had um, various APIs or various databases used. Okay. One guy is asking, I have only basic projects. What should I do now? फुल स्टैक एप्लीकेशन सब बना सकते हो भाई, बेसिक प्रोजेक्ट्स से नहीं होगा. यू शुड फोकस ऑन फुल स्टैक एप्लीकेशंस. अगर एमएल में इंटरेस्ट है तो एमएल बेस्ड प्रोजेक्ट्स यू कैन मेक. बेसिक से काम नहीं चलेगा, सिंपल सा बात है. बेसिक से वाला ultimately find whatever you're most interested in. Like, although it is possible that you will find none of them interesting, but at least try something which interests you the very least, and then go on with it. Find a YouTube tutorial, then try to complete it, and then do projects on your own. That's the biggest takeaway. Unless you can explain each part of your code which you have typed out, or even if you have copied, but if you can't explain it, then there is no point in doing that. Yeah, you can also many people copy from YouTube. You can do that, but you should be knowing every part of the code, like how it works, which part of the code does what part, and everything you should know about your project. One guy is asking, conference paper in ML help करेगा क्या? It's hard to say, because as I said, the team which came for a placement drive was the backend team. There was no one from. They have a team for LLM, but that team did not come, or nobody came from that team. So it's hard to say actually, because we have been in only one placement drive of Gupshup. So it's hard to say that. It's hard to say that okay, they will take. Can help in some company or the other, but guarantee नहीं है कि उससे हो ही जाएगा. Yeah. Can help in some. Obviously it will. Yeah, some interviewers might be interested. See, my second technical round, he was really interested in my achievements, whatever achievements I put in my resume. So yeah, that might help, because it depends on each interview, whoever has more interest in whichever subjects. One guy is asking, some people solve a problem and make a project over it. Is it necessary, or just showcasing full stack is sufficient for any project? I think what matters is intent behind the project. So what they see in the project is like, what problem are you solving, right?
It's not just you're doing full stack for the sake of full stack, right? Because Gupshup as a company, it specializes in creating communication channels over SMS or through WhatsApp. So it's solving a problem, right? It's delivering a product which solves a problem. So at the end of the day, they want to see that how are you applying your knowledge to practical usage. So yeah, just a Try plain. to keep your project something unique because सब लोग एक ही जैसा project copy paste करके बना देते हैं. Try कि your project is a little unique and different, and it solves a real world problem. One guy is asking if I made a project, if I made a full stack web app, uh, and I have one more group project, should I now completely focus on DSA? One group project and उसने एक फुल स्टैक वेब ऐप बनाया है और एक उसका ग्रुप प्रोजेक्ट है. अब क्या वो कंप्लीटली डीएसए पे फोकस कर सकता है? कर सकता है क्योंकि फुल स्टैक एक है और एक ग्रुप प्रोजेक्ट भी है. ग्रुप प्रोजेक्ट डिपेंड करता है किस लेवल का है. मोस्ट प्रोबब्ली उसने ग्रुप प्रोजेक्ट हैकाथॉन में बनाया होगा. आई एम अज्यूमिंग दैट. Yeah, you can mention it as part of your, achievements. और वहाँ पे लिख दो made as a in this competition. वो एक pointer हो सकता है in the resume. Yes, this project I have implemented it in this one and in this much amount of time with my friends. फिर वहाँ पे you can mention which part of the project have you done. तो ऐसे करके कर सकते हैं. Group projects helps because it shows you interpersonal and group working skills, and so it helps. Now I would request Kunal Bhaiya to move on to the next slide so we can proceed. तो फाइनली आप लोग कुछ टिप्स देना चाहते हो अगर आपको गपशप क्रैक करना है तो क्या क्या आना ही चाहिए? मतलब ये कंपनी ये स्पेसिफिक चीज करता है तो ये कंपनी इंटरव्यू जब देने से पहले ये चीज आना चाहिए तुमको. एक हैश मैप्स वगैरह होते हैं. हैश मैप्स के इम्प्लीमेंटेशन की वो बैकएंड में कैसे काम करता है, उसका वर्किंग क्या है. सिंगल बेस्ड हैश मैपिंग होता है, फिर इंडेक्स बेस्ड हैश मैपिंग होता है, फिर क्वाड्रेटिक हैश मैपिंग होता है जिसमें आई स्क्वायर करके लगाया जाता है, और पॉलिनोमियल वाला भी होता है. मतलब बहुत सारी चीजें होती है. तो ये सब इंडेक्स, क्योंकि हैश मैप्स के ऊपर वो लोग बहुत क्वेश्चंस करते हैं, मुझे भी किया गया था. फिर इसके अलावा जो है डीबीएमएस, ऊप्स, और मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ओएस, ये सब अच्छे से आने चाहिए. ओएस में भी डीप लेवल पे एकदम पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछे गए थे. और डीबीएमएस ये सब मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं सब तो आने ही चाहिए. जो मेन 4 सब्जेक्ट्स सब अच्छे से आने चाहिए. और अगर आप yeah, and since the main code base of this company is in Java, so they would knowing Java is a bonus. It's not a deal breaker, but it's a bonus. That not knowing Java is not a deal breaker, but if you know various topics of Java, or if you have done a small project in Java, that will help a lot. Because by that they can gauge your knowledge from their perspective as well, because they have been coding in Java in Java their only. workshop. So basic topics such as the working of Java, how the JDK works, what are the parts of the JVM, and how does multi-threading multi-threading take place, or how is concurrency maintained in Java. And also, as Balmukund said, hash maps. So yes, internal working of some data structures will always be is you should do it, because we have faced it. And for me, they have asked this in both both in the VP round as well as in the second technical round, how the hash maps work, how to and also you should know about the if you know Java, you should also know about the Java util package, the various features that are present in the Java library. Yeah. I would like to put some light on the VP round. What was the VP round and how did you guys manage to tackle it? In the VP round, it was basically they were first testing about how we actually think, because they asked me like how I felt about the
not how I solved the OA question, but what I felt after reading the questions and what were my thoughts regarding it. So basically, they see like how is my thought process, how does my thought process goes on after seeing any question. So I explained 10 to 15 minutes regarding what were my thought process and how it is different from different OAs. So they see how we think, and also they obviously go into the discussion of different topics of DSA. Like they all in the VP round, they asked me regarding the implementation of hash maps, and they also asked me regarding the real world some examples of uh, DBMS based questions, like how does it work, like or how any they solved asked any problem like this is the problem faced in any database. So where can you see this in the real world? So I gave examples of Instagram and YouTube and explained that very properly. So you should be knowing the real world applications of whatever you have studied. Okay. And like finally, how did you tackle the HR round? Like I have seen most of the batchmates of us getting rejected in the HR round. That's really sad. So how did you guys manage to tackle the HR round? अनुमित तो बोल. और हमें तो अपना एक्सपीरियंस बता दे HR round का. Not really. For me, and for rest of us, the team which came for our placement, they were really friendly. They were really, they wanted. I felt like they wanted to interact with us. They didn't just come here for the sake of coming here. They actually wanted to talk with the students and interact properly. So. In this HR round wasn't exactly like an elimination round. I would say the technical rounds and VP rounds before might have been, but not the HR round, because for me there was no for me the first thing which the HR ma'am said to me was congratulations, you have been selected uh, for the FT offer from Gupshup. So that was it from my side. And then she was like, "How are you feeling?" and whatever. So it wasn't like कि एकदम से ही कि elimination round है कि you have to answer. Like for example, in other companies where you have to follow some STA principles. कि कैसे you have to, what is the situation, how to analyze the situation. It wasn't something. It wasn't. Wasn't like that. बाकी सब कंपनी के एचआर राउंड्स में लाइक क्वेश्चंस पूछे जाते सिचुएशन बेस्ड कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो व्हाट विल यू डू इफ सच एंड थिंग हैपेंस इन योर कंपनी व्हाट विल यू डू बट इन आवर केस माय केस at least it was like when the round started she was like in this round in this round I won't be asking you questions, instead you have to ask me questions. Yes. She was like that. So the whole it was like for 30 to 45 minutes around it went the HR round, and the whole time instead of her asking me the questions I was the one who was asking her the questions. So it was like she was checking like how much I am actually interested in the company. और कोई होता है कि सीधे जाके बोल देगा नहीं मैम मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ मैं हो गया. तो ऐसा नहीं है. मैं I asked the questions, kept on asking the questions like 40-45 minutes. And I even went in the background of the HR also, like why are you in this company. बहुत ज्यादा चला गया था कि वो आप यहाँ क्यों काम कर रहे हैं, आप पहले काम क्यों काम करते थे. She was in ICICI before, so I asked why did you switch from that company to this company, and बहुत डेप्थ में चला गया था. Really, you are taking the HR round of them. I was the one asking the questions. This was actually to check like how are we actually interested in to join the company or Yes. not. So And, I would like. Okay. Anumit, go ahead. Okay, yeah. And you can ask, questions pertaining to the company's to the interviews. So they are very friendly and they are very open to answering all the questions. So even at the end of the second technical round, the interview asked me whether I have questions for him or not. So I asked him about how to improve myself, and you have to show yourself someone who is ready to learn different concepts and different tech stacks, so you can implement them later on. So you don't have to show yourself as someone who is close-minded, or rather someone who's really open-minded, and they will be ready to interact with you. And yeah, that's it. Even in the VP round, after some of the technical questions, even he also offered me to ask questions, in which I asked him about the work culture in Gupshup, and
and about his past experiences before this company. So yes, Okay. In the chat box, we have a whole stack of questions. So let's take them one by one. Sure. Uh, one guy is asking where Java questions asked for to those who program in C++. No, I actually programmed in C++, and in my resume also it was only mentioned as C++. They are even asked me like, do you know Java? I said that yeah, I have studied it as a as a course in my curriculum, but I'm not well versed with it. So they said like, yeah, it's fine. So even if you don't know Java, it's fine. You can stay. But if you are stating Java as your programming language in your resume, you must be knowing the basics and everything of related to it. Okay. So another guy is asking how computer fundamental questions are asked. Is it like back and forth questioning like those available in GFG? Hmm. DBMS में तो query based questions पूछे गए थे. Okay. एंड ऊप्स ओएस वगैरह में प्रॉपर लाइक उसके अगर सब लोग वो फॉलो करते होंगे गेट्स मैशेस के प्लेलिस्ट, उसके नीचे के कुछ वीडियोस है जो बहुत ही ओएस के डेप्थ में जाते हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो लाइक मतलब सब कुछ कवर्ड होता है. लेकिन अगर जैसे सभी लोग ओएस में गेट्स मैशेस की वीडियोस की प्लेलिस्ट देखते फॉलो करते ही है सेमेस्टर के टाइम, तो वो अगर अच्छे से देख लिया तो सब चीज कवर्ड हो जाएगा. मतलब प्लेलिस्ट जो अपने सेमेस्टर में पढ़ते सब कुछ एनफ है उसमें, बट वो अच्छे से ए टू जेड होना चाहिए कवर्ड. तो और एक जन ने पूछा है ओओपी क्वेश्चंस वेर लैंग्वेज स्पेसिफिक और इन जनरल. for me, they were language specific because I mentioned that I knew Java. So they asked me questions about Java itself. And regarding if you have to prepare for Java specifically, then there are several YouTube channels such as one called Amigos Code. So in which there are several tutorials about from the basics of Java, from system out inline to various advanced concepts such as functional programming and all that. So if you can follow that, that would be helpful. And also there was this YouTuber who has done very good video on how about the internal working of hash maps and other data structures which are present in Java. So if you can follow that, then that would be great. Okay. And is system design important for OA? ओए लाइक इन जनरल भी अगर इम्पोर्टेंट है तो फिर भी बता दीजिए. System design it's not in itself is not important, but in OA you should know about low level design. How to create classes, about the good practices of everything related to oops you should be knowing of all of that. yes. Little bit of design patterns won't hurt. Various design patterns with it. So you should know about the good practices of, because essentially OA of this company is not a DSC based OA, it's a design based OA. So you have Design to based and implementation based OA it has. yes. For Gupshup, low level system design is not required, but if you have time, I would suggest like if you have time कि DSA कर लिया project और सब कुछ covered हो गया, then you should study system design. It will be helpful at some point or the other in other company. Okay. What is the CGPA criteria for Gupshup? क्राइटेरिया कुछ नहीं था. Was there one? I don't remember. इसमें CGPA क्राइटेरिया नहीं था, बट ऑब्वियसली 8+ सबको ऐसे मेंटेन करना चाहिए, बाकी कंपनीज में काम आता है. 8+ मेंटेन रखो. Do they ask about different tech stacks like Kubernetes, Docker? Like he's talking about DevOps thing. Do they ask No. about? In my own interviews in any of the 5 rounds, they didn't ask about that. They just discuss about the tech stack I have worked upon and my projects, and in detail like how I've worked, what is the implementation, how I have done the things, everything related to what I have done. If it's present on your resume, then you should know about it. Yeah, Otherwise, if it's present on your resume, obviously you should be knowing. But if you haven't mentioned anything, they will just cover your resume only. You should be knowing everything about what you have mentioned in your resume, every single word. Okay, if you have some final words, please share.
आई वुड से बी जस्ट कॉन्फिडेंट, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा एक मेजर फैक्टर क्लियर करने का था कि मेरा कॉन्फिडेंस था। पूरे टाइम हम कॉन्फिडेंस में बात कर रहा था, कोई भी जवाब देगा कॉन्फिडेंस में देगा, वो चीज होना चाहिए। और अगर कोई चीज नहीं आता है, जैसे एक आध क्वेश्चन था जिसमें एक या दो क्वेश्चन था जो मेरे को नहीं आता, एक क्वेश्चन शायद था या कुछ था, तो हम सीधा बोल रहे कि नो सर, आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद द टॉपिक, बट आई विल गो आफ्टर एंड लर्न अबाउट इट। सो लाइक तुमको कॉन्फिडेंस अगर नहीं आता तो सीधा बोल दो, ये नहीं कि कुछ भी बोले जा रहा है, और कॉन्फिडेंस बस होना चाहिए। और जो जो चीजें है कि प्रोजेक्ट आना है, जो रेज्यूमे में जितनी चीजें लिखी है वो सब होने चाहिए, आने चाहिए। और एक हाँ, एक ये चीज होता है कि जस्ट कोई भी आउट ऑफ इंटरव्यू हो, इंटरव्यू के बाद जो इंटरव्यूअर है वो पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो उसमें डेफिनेटली 3 to 4 क्वेश्चंस तुमको पूछने ही पूछने चाहिए, क्योंकि वो वहाँ दिखता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है या नहीं। अगर तुम भले ही मान लो पूरा राउंड अच्छा गया, 1 घंटा इंटरव्यू दिया, सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया टॉप क्लास, लेकिन लास्ट में जब इंटरव्यू पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, एंड तुम उसमें नो बोल दिया, या फिर कोई कुछ पूछा ही नहीं, बस एक क्वेश्चन पूछ के ऐसे छोड़ दिया, तो वो एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो 3 to 4 क्वेश्चंस तुमको पूछने चाहिए, उसके बाद ही वो एक फिक्स है। Okay. और मैं तो तुमको कुछ बोलना है तो So yeah, on the day of the interview, actually I wasn't ready at all for the OA and for the interview because Gupshup came really suddenly to our campus, and many people were out of station as well, and they were हाँ, able to get the OA. So I wasn't prepared at all. So I mean, predictably, I was very nervous, and even the first technical round, I was really nervous, even though I was able to answer most of the questions. Most of the initial questions, but then I was still very nervous, and you know, and then they were really friendly because after I came out of the technical first technical interview and they called me for the second one, the HR actually asked me whether I was nervous or not. So because they were really friendly with all the students, so yes, even if you get nervous somehow, just try to calm yourself down and be ready for the uh, next interview because they aren't here to reject you, or they want to know what how much as Balmukun said, OA, they want to check how much patience or how much tenacity do you have. Similarly in interviews they want to check how much how much can you solve logically, and how much are you ready to learn or absorb, how much knowledge are you ready to learn about from the interview, because in an interview is also a learning experience as well, right? So you have to go by that rule as well. Okay. So I would like to thank you guys for your time, and it was a really helpful session. मेरे को भी एक पॉइंट और ऐड करना था कि Okay, एक हाँ, एफटी के टाइम बहुत सारा कंपनीज में ऐसा लगे कि यार ये कंपनी बहुत मुश्किल है, क्रैक नहीं होगा, नहीं जाते हैं। जैसे ऐसे अनुमित तो जैसे बताया कि गपशप जो अचानक से सडनली आ गया था, मतलब शाम को हम लोग को मैसेज आया कि अगले दिन सुबह वो इंटरव्यू सब कुछ एक साथ होगा, और उसी दिन हम लोग का राखी भी था, तो मेरा था कि जाए नहीं जाए। एंड सुबह हम पूरा रेडी हो चुका था। उसके बाद मेरे फ्रेंड मेरे को बोला कि भाई पूरा जावा में पूरा कोडिंग करना होगा, और मेरे को जावा का जेबी मतलब जावा जो पढ़ा था बस क्लास में बस वो आता था, पूरा हम C++ में कोडिंग किया। तो मेरे दिमाग में किया अब तो जावा में मेरे को C++ या था, जाके मतलब ही नहीं कि पूरे जावा में होगा। तो हम फिर देखा कि भाई अब तो पूरा रेडी भी हो चुका, बैकपैक सब कर लिया था उसमें ऑलरेडी, तो बोला निकल चलते हैं। और वहाँ पे भी जाके जब देखा सब लोग वहाँ पे जाके जावा से रिलेटेड बहुत सारे इन डेप्थ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, जब तक ओए नहीं हुआ तो मतलब भाई तो नहीं होगा, बट हम बोला कि चलो दे ही देते हैं। तो अब दे दिया, और फिर ओए भी निकल गया, इंटरव्यूज भी 5 राउंड था, 5 का 5 राउंड निकल गया। तो एक ये चीज होता है कि तुमको पता नहीं चलेगा कि तब कब तुम्हारा कंपनी क्रैक हो जाए। मतलब एक भी ऐसा कोई भले ही इजी कंपनी लगे, हार्ड कंपनी लगे, बस जाके बैठ जाओ, जो होगा तब बाकी तक पढ़ते रहो, कोई एक जगह लग ही जाएगा। लग ही जाएगा, कब निकल जाएगा तुमको खुद पता नहीं चलेगा। ये चीज है, मतलब नहीं भी होगा कि नहीं निकलेगा, जाके बस बैठ जाओ, वही दे दो, एटलीस्ट नहीं भी निकला तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा। At least learn from others experiences कि मतलब बाकियों ने कैसे किया, इंटरव्यू नहीं निकला तो जिसने भी इंटरव्यू दिया है उनसे पूछ लो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा, तो लाइक दैट एक्सपीरियंस बिल्ड होता रहेगा। और बाय द टाइम इवन इफ पहले इनिशियल कंपनीज में ले, बाकी मतलब बाकी जो कंपनीज आ रहे हैं उसमें लग जाएगा। तो और एक चीज ये भी होता है कि मान लो मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू चल रहा है, तो एक राउंड तुम्हारा खत्म हुआ, मान लो तुम्हारा राउंड 1 खत्म हुआ है, सामने से कोई दूसरा बंदा राउंड 2 देके आ रहा है,
और दिख रहा है कि ऑब्वियसली कोई होना नहीं चाहिए कंपनी का ऑफिशियल, तो तुम उससे धीरे से जाके डिस्कस कर लो कि उससे क्या क्या पूछा गया था, क्योंकि चांस हो सकता है कि तुमको भी वही इंटरव्यू मिले और वो क्वेश्चन रिपीट करे। तो मेरा भी ये हुआ था कि थर्ड राउंड के लिए हम एक जो सामने वाला बंदा है तो उससे पूछ रहे थे कि भाई तुमसे क्या पूछा गया, तो एक दो क्वेश्चंस मेरे भी कॉमन आ गए थे, तो उससे क्या कि वो क्वेश्चंस के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हो गए कि हाँ इसका ये आंसर देना है, तो वो सब चीज़ से तुम्हारा टाइम भी बचता है और तुम सीधा मतलब फायदा होता है कि तुमको पता चल गया कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा। और क्वेश्चन रिपीट होने के अच्छे चांस होते हैं क्योंकि सामने वाले बंदे को जो पूछा गया इंटरव्यू एक कुछ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन ही पूछता है अगर सेम इंटरव्यू में, इसलिए सामने अगर कोई साथ में कंपनी मतलब कंपनी का ऑफिशियल ना हो तो जो बंदा इंटरव्यू देके आ रहा है उससे एक बार डिस्कस कर लो धीरे से कि भाई क्या पूछा गया, कैसा गया इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो उससे फायदा होता है। ओके, ठीक है भैया, फिर चलिए, बहुत थैंक्स आप लोगों के टाइम के लिए। ओके, so we'll be moving on to our next company, which is IDFC. I would request Kunalda to change the slide and Sangeeta Di to turn on the camera. हेलो संगीता दी। हेलो। ओके, तो ओके, पहले आप एक बार जिसमें बता दीजिए कि आपका पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसा कैसे क्या राउंड्स थे वो बता दीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में जो है वो फर्स्ट देयर इज एन ओए राउंड there is basic aptitude questions, that is maths, reasoning and English. And how many questions were there I forgot, and yeah, it was divided in equal parts, I guess. So then after the aptitude round there were two rounds, two interview rounds. One was technical round, another also I will mention it as technical round only, technical plus HR you can say. Okay. So in the aptitude, I in the OA round I already discussed, it was based on maths, reasoning and English. And in technical rounds, if you are for CSIT student, I will tell from their perspective, you can expect. To me, they didn't ask DS, I would say. To me, they gave one algorithm and I had to, and that was bubble sort, very easy. So I had to identify that, and then I have to they asked me to optimize it. So I have to optimize the bubble sort, and then they asked any optimized sorting algorithm that the time complexity will be reduced. So I told them about merge sort, but they didn't ask the code. And then the very important thing they will definitely ask, I guess, is SQL queries. And SQL queries, along with that, it will be moderate to, and joining, those things will be there. So, and you can expect that moderate to, in my case I would say moderate, not hard, but you can expect some advanced questions there. And like joins are really important, right? In any interviews, I guess, for whenever you are learning SQL queries, joining and group by, those are very important in case of any companies. And then they asked some core topics, and that were very basic questions, like they asked resume based questions. So in my resume I mentioned OS, DBMS and OOPS as my core topics. So they asked me about OS, basic questions like paging and why we need benefits of operating system. And in OOPS also they asked basic questions that about four principle of OOPS, those things. And then they moved on to the puzzles. They asked me one or two puzzle, I guess. And then they moved on to some probability questions. They asked me 3 or 4 probability questions, but they were interrelated. I guess I can remember some of them. It was not very tough. Suppose in a rectangle, the one side is painted, those type of questions. So then, so my technical round 1 went well.
I answered all the questions. So I was quite confident that I will get call for that HR plus technical 2 round. So there, um, first they discussed about my internship and my project related stuff. And in my internship, I had in my design that was provided to me, I had an ambiguity there. So they asked me how I handled it and how I approached the problem, like that. Those discussions will be there, and for they will discuss something about the project, and then they moved on to questions. So when the questions began, the HR, he interacted with me. We were just chatting for some times after this, some funny anything, Okay, like just chit chatting. Yeah, anything. yeah. He asked my address, and then so the HR left after that, and then there were 3 puzzles, and one was this. All are available in GFG. One was this 3 and problem. 3 and are that probability questions. Another one was this. There are 100 doors, and there it is available in lit code. There are 100 doors in round one. You will close one door. At first, all doors are open. That question. And in question number 3 was that 9 pills problem, that we have 9 pills, and the minimum number of steps where we have to find out which pill among them is the heaviest. So Means this for puzzle we need to like read the whole 50 or 100 puzzles, I guess, is there in GFG. If we read all those and remember those, most of the puzzles yeah, will. yeah. Most of the puzzles come from that GFG 100 puzzles. Um, so you can go through that before your interview. So yeah, that was. And I would request Kunalda for the previous slide once. Okay, you mentioned that in your resume you mentioned OS, DBMS, and OP, Oops. and you didn't mention CN, right? No, I didn't mention CN. CN was one of my weakest subject, so I didn't mention that. If for any company you guess there, you see that there is a emphasis on core subjects, and there is a need that you have to mention some more subjects. Like if suppose if the company is networking based, I guess then you can mention CN, and you have to learn that, because once you are mentioning it in resume, you have to go through it properly. So I didn't mention CN for IDFC, and that was one of my weakest, so I didn't mention it. Okay, and in DSA you were asked like LC easy, lead code easy, not even medium, right? Okay, so at most you can expect medium. I went through all the previous year questions for CS and IT students. So I discussed with some seniors also from IT background that went into ITFC. So what happens is that for other departments, like in my batch there were some from ETC, and they mainly they had ML based projects, and they had emphasis on ML, and they had some research internships, and also for them they mainly asked some guess estimate questions, like that. But for CSIT students, according to my seniors and some previous year questions, they substitute that I think guess estimate that uh, those problems with DSA, because they don't ask guess estimate problem to us mostly. So you And can expect easy to medium, not more than medium. like Easy, I they guess. don't like more put more emphasis on DSA, right? Like it's a bank, so they might be putting some emphasis on like DBMS. Yeah, they put more emphasis on DBMS, SQL queries. Yeah. But you can expect, in my case, I wouldn't say that was a DSA question. They
bubble sort. Okay. Okay. Then, Okay. I can. but for previous year, I have seen that they asked DSA questions, and to my seniors also they asked DSA questions. But those questions are not, you can say that hard, so easy to medium, not more Like than that. for IDFC, DSA, DBMS much greater than DSA. Yeah. Mhm. Right. Okay. So I would like to take few questions. ML project must for IDFC. In my case, I had no ML projects. I had a full stack project, and I guess it is better if you have ML project, because my other who have got selected, mostly they had some. But Okay. if you don't have, you can have a full stack project, and you can be strong in other topics. Okay. Basically, they want to check how much like you can handle data like from ML Um, projects. Like See, yeah, SQL queries like that you can, but their motto is that they will see that how you can solve problems. hmm, So their motto is that once you join the company, if you can solve problems, you can learn quickly. So hmm, they are not worried about that. If you are, they are not that much worried about that if you are fluent in ML or not. They are okay. more worried about that if you can solve problems given to you. Okay. And one guy is asking also the cutoff of the OA was around. There Like were I, no, okay. I Um, guess he's asking for the CGPA cutoff or something. CGPA, there were no cutoff, I guess. CGPA or and cutoff of the OA was around. So find Um, out. Matlab, I guess he was asking like how many questions would be solved so that I get selected in OA. You can it answer. varied. So I don't know that. I don't know. I don't have the idea. So I guess I made five or six, five, at least five questions wrong in that way, Okay. and uh, it varied too. Some people claim that they solved more. It varies. Hmm. I would request Kunal Bhaiya to like move on to the last slide of IDFC. Yeah. Okay. So like final tips and tricks for like IDFC. Like IDFC wants this. You have to know at least this. Okay, so final tips is you have to put emphasis on SQL queries and puzzles. Hmm. Though puzzles they will definitely ask, and SQL queries, if you are CSIT student, they will definitely ask. Hmm. You have to do some DSA, because I guess there are plenty of interview experiences from CSIT perspective that they have asked DSA, Hmm. but that those will be easy. It should be easy. Hmm. And probability questions, yes, and it can be hard. Probability questions may go up to advanced level, so be prepared with that. And um, okay, so another thing is, for any interview you have to be interactive with the interviewer, from not Hmm. from the not from only from IDFC point of view, Hmm. from the from my internship experience part of view also. My From internship any company, interview, like any company. yeah, for any company Yeah. you have to be very interactive with the interviewer. Hmm. In my internship experience, for the second DSA question I was asked, I at first, when they asked me to optimize it, I Hmm. was taking a minute to guess the data structure. Okay. So they interacted with me so well that it became really easy for me to get the data structure what Hmm. it will be used. So, and I also gave them, they were also expecting me some suggestions how to, uh, means the question was like that they didn't fully tell me the question. Hmm. They were expecting me how I will modify the question
so Hmm. that it will be the optimal one. Hmm. So like that, any interview, this didn't happen in IDFC, it was in my internship time. So for any interview, you have to be very interactive with the interviewer. It is very important. And from my rejection that I have faced, I can tell you that the mistake that you shouldn't make, that I made in one company, Hmm. that you have to be very when there it is offline interview, you have to be very tidy and in how you represent the code or any answer, because in one of my interview I just, it became very messy, my representation became very messy, so it was one of the drawback. So you have to be very tidy in how you represent the code, because the thing is not that how much, it is thing is not only that how much you know, you have to explain to that interviewer, in case of Hmm. IDFC, in case of any companies. Hmm. And And yeah, I would love to take some questions now. Uh, one uh, guy is asking, like, for non CSIT student, how should a student prepare for technical rounds apart from SQL queries, puzzles, and probability? okay, you can expect guess estimate questions, Hmm. and I think you can expect some statistical and mathematical questions also. And I guess Okay. they, if you are from, I don't know about this for sure, but Hmm. some of my colleagues from ETC, Hmm. they had some ML based projects, so you have to be, I think you have to do some ML related stuff. They had a research paper, Hmm. so instead of that I had internship experience and these projects. So in place of that, you have to prepare something that you can cover up those areas. Okay. Uh, One guy is asking from where to prepare probability questions. Probability questions will mostly from class 12. Okay. Like class 12 level, nothing more Yeah, than. class 12 level, not more than that. Okay. I guess this question has been already answered, but still, what kind of questions are asked for core students? For course students, Core yeah, students. for non CSIT students, you can see your interview will be resume based. So my first tip will be thorough with what you have written in the resume. Hmm. And in my case, I had project and web projects and Hmm. internship. Be sure to supplement something with, use something instead of that, Hmm. and try to have something like research internship and internship also. Hmm. Try to have that. What is the level of aptitude reasoning level? Like, what kind of, what is the level of those questions? Yeah. So you can expect that one medium to hard, Acha. and some questions were easy too. Okay. It varies, but it is available in the internet. Not some uncommon questions. You can most of the questions are available in Google. Hmm. Can you give a good playlist for aptitude questions in OA? Like, suggest something for like aptitude Play. questions. Playlist or something, anything, any material or any website. They are available in Google. So I cannot give you the, they were from different sources, so I cannot give you that exact some playlists or that. Okay. Uh, I didn't follow it, so I don't know about it. okay. Okay. So finally, if you have to say something, like, if you want to crack IDFC, you have to know at least these things. Yeah. So uh, if you want to crack IDFC, first of all you have to be interactive, Hmm. because first of all you have to make them believe that if you get through through uh, Hmm.
you will learn things very quickly. You have to give them that illusion. And you have to be prepared with SQL queries. You have to be prepared with puzzles and some basic code topics. And yes, for CSIT student, you can expect DSA. And emphasis should be on SQL queries. They will definitely ask, and puzzles they will definitely ask. And yes, you should be thorough with your resume. Okay. So I would like to thank Sangeeta Di for your time. It was really insightful and we got to know a lot of things from you. So thank you, Sangeeta Di. Thank you. Kunal Bhaiya, I would like to request you to move on to the next slide, and I would like to request Kingshuk Bhaiya, Anumay Bhaiya, and Priyanshu Bhaiya to turn on their camera, and we'll have Sorry. uh, we'll have Oracle as our next company. So please turn on your camera. Hello. Hello. Yeah, am I audible? Yeah, you are audible. Yeah. Okay. Hi everyone. Yeah. Hello, Priyanshu Bhaiya. Hello, Kingshuk Bhaiya. Hello. Anumay Bhaiya. Yeah. So let's start, I guess. Okay, Kingshuk Start. Bhaiya, won't you be turning on your camera? Actually, I haven't set it up yet, so Okay, yeah. okay, fine. I guess they can hear me loud and Oh, clear. cool. Okay, so I would like to request all three to give a gist of how it started and how it ended. So overall, you can say some gist about it. Uh, So কি করব আমি বলবো স্টার্ট করব yeah, so, Start first. can start. Bro. Okay. So basically there were means 4 rounds means talking about OAR interview. So OA talking about the OA, so in the OA we have actually 4 sections. One was the English, that is grammar and passage questions, and second is the aptitude, and third is DSA, and one is REST API question. Okay. So this was the basic pattern of OA, and then comes the interview. So interview are of 3 rounds. First was technical plus HR, and second was also technical, and third was actually VP round, who actually asked technical plus the HR questions. So this was the basic flow of the overall interview. Okay. And what is REST API? What is REST API? So This seems different. in the OA, so OA में क्या हुआ था कि हम लोग का 4 सेक्शन था. तो 4 सेक्शन में हम लोग का एक एमसीक्यू का था, एप्टीट्यूड वाला. ठीक है. तो एप्टीट्यूड में बेसिकली हम लोग को मैथ्स और कैलेंडर, बार ग्राफ ये सब पूछा था. ओके. सो एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है उसका लिंक मेरे पास है, मैं ब्रोतिन को दे दूंगा, वो क्लास को सप्लाई कर देगा. ठीक है. सो एमसीक्यू का पैटर्न मैं दे दूंगा उसको. ठीक है. और सेकंड इज द इंग्लिश व्हिच इज ग्रामर एंड पैसेज. तो इसमें भी बेसिक ग्रामर था, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिनोनिम वो सब था. ठीक है. और थर्ड में हम लोग का था डीएसए और रेस्ट एपीआई. सो रेस्ट डीएसए तो बेसिक मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही था. मेरा जो क्वेश्चन था वो था एलआईएस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस. और रेस्ट एपीआई एक नया टॉपिक है जो मतलब ओरेकल में स्पेसिफिकली पूछता है. सो रेस्ट एपीआई में एक्चुअली वी आर गिवन अ यूआरएल and or API in which we have to return the fetch the data and return the specific result. Okay. So इसका मैं एक इसका तुम लोगों को मिल जाएगा हैकर रैंक पे एक लिंक है रेस्ट एपीआई का. सो आई एम गिविंग यू द लिंक इन द चैट. ओके. सो इसमें जाके देख लेना कि क्वेश्चन इसी टाइप का था. ओके. होपफुली सबको मिल गया, यूट्यूब लाइव में दिया हुआ है. And also about the REST API, right? Please follow the previously asked questions. Like some Yeah, of them exactly. were kind of common actually. So
from the Oracle OA itself, right? So हम्म। please do keep that in mind. So yeah. और उसका लिंक भी मैं दे देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो उसका वेबसाइट का मैं लिंक दे देता हूँ, यूट्यूब चैट में देखना, ठीक है? एक सेकंड। तो यहाँ से तुम लोग को सैंपल मिल जाएगा, और एक्चुअली इस साल ये पूछा गया था, यहाँ जाके ओरेकल का रेस्ट एपीआई सर्च करना मिल जाएगा, ठीक है? ये था रेस्ट एपीआई का प्रॉब्लम। और डीएसए में तो बेसिकली डीएसए स्टैंडर्ड था, जहाँ हम लोग को, मेरा तो एलआईएस पूछा था, किसी का डीपी ग्राफ्स ये सब पूछा था, ओके? तो उसका भी मेरा लिस्ट है एक, तो वो सप्लाई कर दूंगा। अनुमय भैया एंड किंशुक भैया, आपको डीएसए में आपका भी लाइक सेम एलआईएस पूछा था? एलआईएस नहीं पूछा था, पर ओके, मेरे को एलआईएस नहीं पूछा था, बट that question was kind of standard as well, like not much out of the box or something. Yeah, like how the question was framed, because we can see in OAs like question मतलब लीड कोड जैसे सिंपल वे से फ्रेम नहीं होता, जैसे सीएफ में फ्रेम होता है वैसे फ्रेम होता है। तो इधर क्या सिंपल वे में ऐड दिया हुआ है, ये करना है, ये बता दिया था कि लाइक मतलब स्टोरी में फंसाया था? no, obviously it was a story based question, obviously, like normal OS. Yeah, okay, I got it. एक्चुअली क्वेश्चन सबका अलग अलग था, मतलब सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं था, जितना कैंडिडेट था सबका अलग अलग क्वेश्चन था, ठीक है? और किसी का, मेरा तो सिंपल प्लेन क्वेश्चन आया था, मतलब प्लेन एलआईएस, मतलब ऐसे ही, कोई स्टोरी वगैरह मैंने नहीं। ऑनलाइन असेसमेंट बहुत ही इजी था, बट द पॉइंट इज बहुत जल्दी सॉल्व करना होगा। करेक्ट। अगर शॉर्टलिस्ट होना है तो उसके पर्सपेक्टिव से भी, और अगर शॉर्टलिस्ट हो भी जाओ तो भी ऊपर के अगर 10-12 में नाम आ जाए ना, तुम्हारे लिए एडवांटेज। करेक्ट। एक्चुअली इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो मैं जब ओए दिया था तो मैं बहुत जल्दी सॉल्व किया था। सो मेरा 2 नंबर पे नाम था। तो क्या हुआ था कि पूरा इंटरव्यू जब तक सबका थर्ड राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मेरा अराउंड 11:30 मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट होके, मतलब पूरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मेरा सेकंड नंबर पे नाम था। तो इसमें क्या होता है, एक फायदा होता है कि सिलेक्शन का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, सो ट्राई टू डू द क्वेश्चन एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, सो बेसिकली हम लोग का 35 टोटल सिलेक्शन था, उसमें आईटी का 10 जन था हम लोग। So like after selection, when did you get called for the interview, or when were you informed like now you have the interview? Immediately or like within 1-2 days? हाँ, probably कुछ दिन बाद like we had our OA on 20 August, I guess, and we had our interview on 23rd. Around 23rd we had the interview. So like we got the shortlist like 2 days back, I guess. Not obviously immediately, but yeah, we had ample time to prepare. But don't take that chance, that is don't prepare in between that shortlisting and interview time. So we have to be prepared from the beginning only. Okay, so ऐसे नहीं होता कि 2 दिन में मतलब रिस्क ले कर लेंगे, होगा नहीं कभी, ठीक है? Yeah, placement preparation is like a 3-year stuff, like, right? So it's not a stuff of like 1 month or 2 months or something. A long run. Obviously, it's not a sprint; it's a marathon. So I would like to request you to put some light on how many rounds were there in interview and what was asked in which round. Okay, so let me start. So we had 3 rounds. So every round were I can talk about myself. Like my 3 rounds were, all of them were a mix of technical and behavioral questions. Like, so first interview when like he asked me about my intro. Then most of the questions were around my CV. Like if you're writing like some stuff like you have some traits like communication and leadership and all, you have to like be prepared to answer those questions also. Like see, like technical questions, if you have ample preparation, like you can easily tackle them. Like there was no like out of the box or like fancy questions and all. They're very easy. Like if you know your stuff, like if you know your CV, right, you can easily answer those questions. But those behavioral questions, like
they can be sometimes kind of out of the box. Like you have to be prepared for the improvisation and all. So yeah, and one question they were really fond of is the software development life cycle. Like I was asked this question in all of the three rounds. Right? So yeah, you have to be like it is a part of the software engineering subject like we had in our fourth Mm. semester, Good right? sir. Right. Yeah. Yes, sir. So normally we don't like prepare for that subject for our We study in the placement last night preparation, and right? go to the exam. Yeah. So you have to keep that in mind. So yeah, and the managerial round, like it was also like it was not a managerial round as such. It was taken by the VP. So the VP yeah, gave me one puzzle. Like it was a pretty standard puzzle. Q was colored red on all the faces, and it was cut into 64 small pieces. Like it was, you can search on the Google. Search on Google is pretty simple question. Like you can solve all the like you can see all the GFG 100 puzzles and all. It is sufficient for that. And he gave me a like easy DSA, like they didn't really ask much DSA to me. I don't know about Anuma and Priyanshu. So he asked me one question like in an array. I had to like segregate the odd and even numbers. So like Like it in was time complexity, like O of n. yeah. Often time comes over one space complexity, right? So yeah, I would have straight up went up to the optimal solution. I gave him a normal 2-pointer approach. Like it was pretty standard question, not really fancy, not something out of the box. The Mhm. behavioral questions were really like key. Like one of our like batchmate, he got eliminated because of that, because he like from the get go, like from the first round, they were talking about like how the like work pressure will be like a bit high on the scale, right? So he made a sip up and asked the VP about work life balance. So I guess he got cut off at that round only. Like so yeah, it was really unfortunate. So yeah, like I got asked about my CV and all. So nothing fancy, like but you have to be like you have to have the presence of mind and have to improvise on the behavioral questions, right? And also there is a PPT before the interview round, so please be attentive to that also. Like the VP asked me about that PPT, like what have you learned from the PPT, like so as you guys know, the Oracle has been in a partnership with Premier League football, right? So Mm. that point has really like stuck up in my mind, so I talked about that. So and VP like was quite impressed about that. So yeah, so that's it. Like technical stuff you already know, like you have been preparing for what, like 2 years 3 years for this preparation placement. So yeah, if you are true to yourself and you can be confident about yourself and confidently answer about those stuff, it's pretty easy technical stuff. But the stuff that can be kind of tricky is the behavioral questions, I would say. So yeah, Like that all was of you have attended the PPT round, like the PPT. Yeah. Like how much important is attending the PPT? Like most of us are, obviously skipping PPTs. One of the most important in Oracle, in case of Oracle, okay. So अगर मेरा जो VP इम्प्रेशन राउंड में हुआ था, इम्प्रेशन बनाना है तो पीपीटी अटेंड करो. हाँ, मेरा जो VP राउंड में हुआ था, VP राउंड में मेरे को पूरा पीपीटी में जो जो हुआ था उसका डीप में पूछा था कि क्या हुआ था, मतलब क्या क्या, मतलब Oracle के बारे में जो डिस्कस किया था वही सब पूछ रहा था VP राउंड में भी. So PPT is one of the important. When was the PPT held? Like it was before OA First, or same day of the before interview. the interview Oh, round. Like oh, it was at 9 a.m. I guess, and the interview rounds were Around like 9:30 at or 10, I guess. yeah, and the interview round starts like around 30 odd minutes after that. So yeah. so in between all this, like DSA projects and CS fundamentals, what is the most important for Oracle or balance of all three? I would say CS fundamentals and projects were more important in my case. Hmm. So yeah.
Yeah, projects और are the one of the most important part in the Oracle. मतलब जितना भी राउंड हुआ था, किसी भी राउंड में ऐसा नहीं था कि प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा, और प्रोजेक्ट के बारे में ही इन डेप्थ पूछ रहा था। जैसे कि मतलब ओवरऑल फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, शुरू से कैसे बनाया था, फिर डायग्राम की प्रोजेक्ट का फ्लो कैसा था, उसका फ्लो डायग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद डेटाबेस का डिजाइनिंग कैसा हुआ था, कौन सा मतलब एंटिटी कैसा था, एट्रीब्यूट उसका कैसा था, ये सब पूरा डिटेल में मतलब प्रोजेक्ट को बिल्ड किया था। Main thing was the project and SQL and a bit of DSM. I was asked oops as well, so yeah. हाँ, oops भी पूछा था, correct. Like projects and CS fundamentals over DSA, right? For Oracle. For interview rounds, yeah, you have to be like Yeah. For you have to be clearing the OA as OA well, round right? तो we have to do the DSM and REST API तो important है, आएगा ही क्वेश्चन उसका, ठीक है। लेकिन DSM में भी मेरे को KMP पूछा था, तो बेसिकली वो O of n square में भी satisfied था, लेकिन so to get a edge over the other candidate I told about KMP. So मतलब सब प्रिपेयर करके जाना, इससे कुछ हार्ड कोडेड नहीं बता सकते। So I would like to say like what are the final tips like Oracle में जाना है तो ये चीज आना ही चाहिए, मतलब project and puzzle, project and puzzle, प्रोजेक्ट पजल, रेस्ट एपीआई भी आना चाहिए, नहीं तो रेस्ट एपीआई देख के जाओ भाई, रेस्ट एपीआई देख के जाओ भाई। मेरे को जो एसक्यूएल पूछा था ना भाई, एसक्यूएल उतना भी मतलब कुछ फैंसी मतलब ट्रिकी कुछ नहीं था, प्रॉपर मतलब तुम्हें अगर एसक्यूएल मतलब तुम अगर करिकुलम का ही करे हो तो उसमें हो जाएगा, कोई चाप नहीं है। और मेरे को लास्ट राउंड में एक टेबल दे दिया था और उसको मतलब नॉर्मलाइज करने को बोला, 1NF 2NF, pretty standard question, nothing fancy at all. So the tricky part are this REST API stuff. Like REST API में बहुत लोगों का मतलब नहीं मिल रहा था मतलब आंसर, so that was kind of yeah. मतलब प्रोजेक्ट तो अच्छा से एकदम करके जाना, प्रोजेक्ट हाँ, में एकदम कुछ मिस करना ही नहीं है, ठीक है। पूरा जितना भी बनाया सब कुछ, और फर्स्ट इज अ प्रोजेक्ट एंड सेकंड इज अ पजल, पजल तो करना ही है, ठीक है। पजल मेरे को रिजेक्ट भी हुआ हूँ, ठीक है, सेल्सफोर्स में पजल के वजह से, ठीक है, वो अलग सीन है, और वो करना ही है, ठीक है। उसके बाद एसक्यूएल, ऊप्स, ये सब बेसिक टॉपिक है, ये मतलब हर एक इंटरव्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा ही पूछता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछता, ठीक है। ऊप्स का ही बेसिक पूछा था, पिलर्स ऑफ ऊप्स, वो सब। yeah, he एसक्यूएल asked का me मेरे को to डुप्लीकेट करने बोला था he asked टेबल me से। to write the code of a template, C++ template, so yeah, keep your basics in check. Okay, so basically REST API is really important for Oracle. Like this is one of the key thing only Oracle asks, right? Or your knowledge like any other company asks. Yeah. See, one thing I want to tell, that is REST API जो तुम कर रहे हो ना, तो इस साल का अगर Oracle हम लोग को जनरली अगस्त में आता है, ठीक है, मतलब हम लोग का टाइम में आया था, तो क्या हुआ था कि जो प्रीवियस जो कॉलेजेस में आता है उससे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मतलब कलेक्ट करते रहना कि कैसा टाइप का पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके जाना ओए में, सिर्फ ओए में ही रेस्ट एपीआई इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और सेकंड थिंग इज इंटरव्यूअर के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे ओरेकल में इस साल हम लोग का क्या हुआ था कि प्रोजेक्ट पे पूरा ग्रिल किया था, ठीक है, लेकिन हम लोग का जो सीनियर था ना, उसने जो हम लोग का सीनियर सिलेक्ट हुआ था, उसका प्रोजेक्ट उतना कुछ खास नहीं था, ना कि उसको प्रोजेक्ट में ग्रिल किया था, ठीक है। तो ये है सेकंड पॉइंट। तो बेसिकली ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि क्या होगा, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग का जो एक्सपीरियंस मिला है वही बता रहा है, लेकिन इंटरव्यूअर जो है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है एक्चुअली, ठीक है। And also for the core students, like one electrical engineering student was asked electrical questions as well, so it kind of depends on the interviewer as well. So like I would like to take some questions. Are you guys okay with that? Yeah. Were system design questions asked in interview? No. Okay. Not to me. CGPA for Oracle for non-CSIT branch. CGPA for Oracle for does they even allow? Yeah, allow, they allow. All the Yeah.
Then They were सेवन like, सेवन या 7.5 ऐसा कुछ था, 7 प्लस था आई गेस. puzzle resources already discussed. GFG 100%. That's right. that should suffice. That's common thing. Weightage of internship ना experience. ना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस what- किसी ओरकम से Nothing मतलब भाई, मेरा ही नहीं था भाई internship कुछ. Okay. And one guy is asking if I have projects on ML machine learning, will that be a problem in interview rounds at Oracle? And from where can I learn about REST API? One question is already answered, and the first one. ओके सो मेसी लर्निंग কিছুই না যেরকম मींस कोई नहीं सिर्फ एमएल का मतलब प्रोजेक्ट है ना कोई भी टॉपिक हो एमएल हो ब्लॉकचेन हो फुल स्टैक हो एंड्रॉइड हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बेसिक थिंग इज हर एक कंपनी के लिए तुम क्या काम किए उसमें क्या यूनिकनेस है उसमें और व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड हाउ यू हैव सॉल्व्ड इट मींस बेसिकली यू नो द फ्लो ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट ओके सो दिस इज द रिक्वायरमेंट दैट इंटरव्यू सर्चेस इन यू ओके सो यही प्रिपेयर करके जाना एमएल का कुछ ऐसा नहीं है कि एमएल बना दे तो नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ प्रोजेक्ट अच्छा से काम किए हो तो होगा ये सिंपल मतलब लॉजिक है भाई सीवी में जो लिख रहे हो ना सब आना चाहिए भाई, अगर नहीं हाँ। आए तो मत लिखो भाई. हाँ लाइक मेरे को मैंने लिखा था कि गिटहब लिखा था मैंने सीवी में, ठीक है. तो मेरे को पूछा था गिटलैब और गिटहब में लाइक ये डिफरेंस क्या होता है, तो मेरे को तो पता था, बट बहुत सारे बंदे को मतलब गिटलैब अगर बोलते हो ना, गिटलैब पता ही नहीं होता है गिटलैब क्या होता है, ठीक है. तो वो मतलब मतलब तुम्हारा मतलब क्या ही बोले, तुम लोगों को फंसा दे सकता है मतलब इंटरव्यूअर, तो कीप दैट इन माइंड. REST API practice question we can get in hacker rank okay I have given the link in the chat box both in give the link I am giving you in the I mail will share it also later on after the meet. yeah And please, one guy is asking, please tell me one thing. I have only 7 plus CGPA. How interviewers react or ask about relatively lower GPA? CGPA. जीपीए से मैटर नहीं करता, वो सिर्फ वो एक के टाइम क्या आ जाए, इंटरव्यू में कोई नहीं पूछे. हम लोग का इंटरव्यू में तो WG रैंक भी पूछा था हाँ, मेरा यही एडवांस एडवांस का और रैंक भी मेंस पूछा. का रैंक भी पूछा था Technical or like managerial? VP राउंड में. VP round. हाँ VP राउंड So if you have guys have to put some final light like on the final tips, like Oracle में जाना है तो ये भी करना है, and REST API तो एक हो गया, वो important है Oracle के लिए. DSA question OA के लिए important है, interviews के लिए उतना important नहीं है. To sum this up, and SQL questions क्या पूछे थे? Amage SQL question was the remove the duplicate element from the table. It was for me and Onmoy and Kingsuk. मेरे को तो जॉइन से पूछा. Yeah, I was asked for a joint question as well, so I don't exactly remember the question, but that was quite easy. Like, shouldn't be any problem for you. I'm asking the chat if you have any more questions, please put it on the chat box. Any kind of doubt, any sort of doubt regarding Oracle? Okay, Brotin, write one thing in the tips that is HR is important. In each and every round there were some HR questions also, and those were tricky as well. एक्चुअली एचआर राउंड भी था हमारे टाइम पे, हुआ नहीं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली. I guess Kunal Bhaiya has left the meeting. Yeah, like I said, like the behavioral questions were like kind of tricky, like on the spot. You have to have the presence of mind. You have to improvise. Like my second round was mostly behavioral questions. Like he was like a senior manager, I guess. So yeah, you can tell. Like they actually check whether you are interested in Oracle or not, and you have to know previously about the company you are means going for interview. Okay. Kunal Bhaiya, please share the PPT.
Yeah, right. Bhaiya, if the interviewers ask, do you have any questions, how to answer that, and what questions to ask? This is an important part. Okay, so basically what I did was I had prepared a set of questions to ask to the interviewer before the interview. So प्रिपेयर करके जाना, पूरा अच्छा क्वेश्चन लिख के जाना, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी पूछ दिया, ठीक है, तो इंप्रेशन खराब होता है उससे, ठीक है. तो बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर सम सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आस्क, सो इससे इंटरेस्ट तुम्हारा दिखता है कि तुम यू आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी एक्चुअली. सो जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज फ्रेशर से कैसे काम, so what are the expected from the fresh hires. Okay. फिर काम कैसा होता है, क्या काम होता है, बेसिकली प्रोडक्ट कैसे बनाता है, प्रोसेस कैसा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ऐसे ही कुछ पूछते रहना, सब अच्छे क्वेश्चन. Is behavioral round all about talking in star pattern and positive answers? Diplomatic and positive answers only. Yes, we don't have any more questions. So yeah, thank you to all three. We are really glad that you spent your valuable time with us and gave such insightful information. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Good luck, y'all. All the best to you all. Moving फोड़ to के our- आना भाई, फोड़ के आना. एकदम सब फोड़ के आएंगे. आप लोग ने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, सब लोग को पहले से अभी पता चल रहा है कि क्या होने वाला है एंड ऑल. Okay, now moving to our next company, that is Deutsche Bank. I would like Kunal here to change the screen, and I would like Deutsche Bank interns Rohina, Monosrija, and Shanavas to turn on their camera and address us. Hello, am I audible? Yeah, you're audible. Shanavas, are you there? Yes, I am. Hello. Okay, so let's start. Sum up everything from the start, beginning from giving the OA till the final selection. So you could sum up. Yes, sir. Rohina, you handle the. Okay, so the OA it had 2 DSA questions and rest 10 MCQ questions that was based on CS fundamentals. So the Monisha, you were saying something? No. Okay, continue. So for the DSA questions, it was medium. I will say LC medium level. One question was based on greedy approach. Another question was on 2-pointer and sliding window. Yes, one greedy and 2-pointer and sliding window. And then moving on to the interview rounds. इंटरव्यू मोस्टली तुम्हारा प्रोजेक्ट पूछा गया था, मतलब एक डीएसए क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब पहले तो प्रोजेक्ट कितने राउंड्स हुए थे एंड लाइक कितने राउंड्स टोटल हुए थे? टोटल 3 राउंड हुए थे हम लोग का इंटरव्यू. फर्स्ट राउंड, उसके बाद सेकेंड राउंड, दोनों टेक्निकल थे, और थर्ड राउंड एचआर था हम लोग का. Okay. तो पहला राउंड में तो स्टार्टिंग हुआ था, तो उसमें पहले हम लोग को एक डीएसए का क्वेश्चन पूछा गया था, एंड देन उसके बाद हमको डायरेक्ट बोला गया कि अगर तुम अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया हो तो उसको ओपन करो. तो उस समय हम लोग ओपन किए उस संग, और उसके बाद फिर वो मेरा थर्ड प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया गया था. मेरा रिज्यूमे में 3 प्रोजेक्ट था,
तो वो Okay. मेरा थर्ड प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, उसमें वो सारा कुछ हमसे पूछ लिया, मतलब A to Z, जैसे मैंने क्या किया क्या नहीं, सिंटैक्स लिखवाया मुझसे कि कैसे मैंने किया कैसे नहीं, वो सब कुछ मुझसे पूछा। तो अगर मतलब प्रोजेक्ट करना है, कहीं से छापना है भी, तो ऐसा छापना है कि लगे कि वो तुम खुद किया हो, हर एक लाइन हर एक Like, कोड तुमको तुमको सब पता, कुछ समझ आना चाहिए बेसिकली। खुद समझ आना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो ऐसा चीज पूछता है ना कि तुम अगर खुद से नहीं किया होगा तो तुम नहीं बोल पाएगा। तो फर्स्ट टिप्स तो ये है कि खुद का प्रोजेक्ट खुद से किया करो, कहीं से छाप भी रहे हो तो सब कुछ पता होना चाहिए। और एक एक इजी क्वेश्चन समझ लो लीड कोड का था, तो वो पूछा था डीएसए में, और उसके बाद मोस्टली उप्स और डीबीएमएस पूछा था फर्स्ट राउंड में। Okay. And how much importance did your CGPA play in all clearing DB? Like, I know you three guys, so your CGPA is also very high. So you could put some light on that. In the second round, means this commented on the CGPA. I remember making some comments on the CGPA that okay, it is good, keep it better. So they commented on the CGPA. And for projects, as Shanawaz said, yes, at least one project should be deployed because they wanted to see the live project. So only one project was deployed. So the interviewer also asked me that what planning did I make for deploying the other projects. And how was the HR round? Like, what kind of questions were? अच्छा राउंड सिंपल था, मतलब वो उतना ये नहीं हुआ था, लेकिन अब सेकेंड राउंड में मतलब वो तुम्हारा ना जितना भी प्रोजेक्ट रहेगा ना, जैसे मेरा फर्स्ट राउंड में एक प्रोजेक्ट पूछा था और सेकेंड राउंड में दोनों प्रोजेक्ट पूछा था, मतलब मैं टोटल तीनों का तीनों प्रोजेक्ट हमसे पूछा गया था। तो ऐसा मत सोचना है कि मेरा दो प्रोजेक्ट सही है तो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट डाल देते जो हमको नहीं आता है या कुछ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों प्रोजेक्ट पूछा जाएगा। और सेकेंड राउंड में ये भी पूछा गया था कि डीबीएमएस का मतलब थोड़ा लेवल इंक्रीज करके पूछा गया था उसमें। तो डीबी के लिए डीबीएमएस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और उप्स नॉर्मल पूछा था, उतना ये नहीं था। और थर्ड राउंड में तो एचआर नॉर्मल ही हुआ था, नॉर्मल क्वेश्चंस हुआ था उसमें। हाँ, एक बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा है, ये लाइक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा तुम लोग फनी वे में लो, ठीक है, दिल पे मत लेना। आप उसने पूछा है आपने कितने प्रोजेक्ट्स छापे? मैंने तो नहीं छापा भाई, छापता तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो खुद से करना पड़ा। And one guy is questioning, please mention the DBMS hard question. डीबीएमएस हार्ड क्वेश्चन टाइप ऑफ वो पूछा था कि एक तुम्हारा वेब एप्लीकेशन है जो और वो तुम्हारे डीबी से कनेक्ट है डाटाबेस से, अगर वो इसमें क्या बोलते हैं वेब एप्लीकेशन में समथिंग एरर दिखा रहा है, तो क्या क्या रीजंस है वो एरर दिखाने का, क्या रीजन हो सकता है, वो सारे रीजंस हमको चाहिए, तो वो रीजंस बताने थे। तो मोस्टली वो रीजंस थे कि अगर तुम्हारा प्राइमरी की फॉरेन की वाला एक होता है ना डिलीट, ये कास्केड नल वाला, वो वाला मतलब बताना रहता है कि कैसे वो सुनना चाह रहा था कि वो डिलीट कास्केड नल मेरे से सुनना चाह रहा था कि वो वाला तुम लगा रहे हो कि नहीं, वो प्रॉब्लम हुआ था। और पूछा था कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, अगर तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है तो वो रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए तुम क्या क्या यूज करोगे। तो वो थोड़ा ये था कि सब उसको सारे आंसर जानना था, तो मैंने उसे 2 आंसर बोला था, तो वो तीसरा वाला मुझे हिंट दिया था कि ये भी हो सकता है। तो बस इंटरव्यू लोग हेल्प करता है थोड़ा थोड़ा, मतलब कि अगर तुम सही पाथ में हो तो तुम्हें आगे तक का वो पुश करेंगे। Okay. And Monosrija, you were asked also the same thing, right? No, my second round was much easier. So we discussed a mix of personal, like personality-based questions and questions about projects and what programming languages I learned, and what projects I did, whether I worked on a team or not, etc. So I didn't get asked technical questions. Okay. No, technical questions. First round में ही मेरा खत्म हो गया था technical questions. Like I was asked DSA and OOPS, DBMS fundamentals, and but second round में मेरा कोई वैसा questions नहीं पूछा. They asked overall. Easy medium or easier than that. Yeah, easy medium level था. Easy था मेरे लिए. In the second round, for me, I will say he asked me specifically every project.
There were 4 projects mentioned in my resume. He asked, and he also asked that when did I do the project, the timeline of the project, whether it was a learning project or implementation of a unique idea, whether I did it individually or as a group. He also suggested me one thing, that to order the projects on the basis of timeline, means the recent project on the top. What I did was, I means I which project I wanted the interviewer to ask questions on, I mentioned it at the first. So he asked me to arrange it based on the basis of timeline. He even noted down that, okay, this is a learning project. She did it individually. Another question, an unexpected question, he asked me is that in college, how are the labs done? Means in groups or individually? So yeah, in third year, one of the OS lab was done in groups. So I said that previously we used to do in individually, but now we are doing it as a group. So I think he wanted to check how is teamwork, means the teamwork. I guess, I'm not sure, but he asked me this question. Yes, I was asked a similar question. Like in second round, they asked me whether I've worked on a team or not. And in my personal projects, I haven't, but I did mention that in labs, we have to work in group and we worked on lab assignments. And in software engineering, I think we had to do an assignment for the evaluation. So I did mention that and the challenges we face. So that works. If you have done group projects for your class, you can mention that in your interview. और वो लोग बोलते हैं कि वो लोग और सजेस्ट भी करते हैं कि ग्रुप प्रोजेक्ट बनाओ। मेरा एक भी ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं था, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारा क्यों नहीं ग्रुप प्रोजेक्ट है, रीजंस बताओ। मैंने रीजंस बताया था, उसके बाद फिर बोलते हैं कि ग्रुप प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई भी इंटरव्यू में जाओ तो ग्रुप प्रोजेक्ट इंक्लूड करके जाना, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो ग्रुप प्रोजेक्ट रहना प्लस पॉइंट होता है। So like I would like to request you to say like some final tips and tricks if अगर तुमको DB में intern फोड़ना है तो। Nala, please change the slide. देखो ओए में मोस्टली वो स्लाइडिंग विंडो प्लस प्रीफिक्स सम से क्वेश्चन देता ही है। मैंने जहाँ तक अब प्रीवियस ईयर भी देखा, तो वो एक ओए में ये है। और एक ये है कि ओए में कि जावा से क्वेश्चन पूछता है, तो एक जावा थोड़ा ये होना चाहिए। और डीवी मतलब मोस्टली जावा पे काम करता है, तो जावा वो लोग ज्यादा प्रेफर करता है, तो जावा एक ये होना चाहिए। और प्रीफिक्स सम प्लस स्लाइडिंग विंडो फॉर द ओए। एंड इंटरव्यू में तुम्हारा मतलब डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। और राइडर्स पढ़ के पजल सब पढ़ के जाना, मतलब पजल्स पूछते, हमसे तो नहीं पूछा गया, लेकिन जो मेरे साथ जो थे वो लोग से पूछा गया था। तो पजल्स एक ये है। और प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट का सब कुछ तुमको पता होना चाहिए। And like if you want to rank those three, like DBMS greater than projects greater than DSI for interviews, right? प्रोजेक्ट सबसे पहले है, उसके बाद greater than anything. उसके बाद डीएसए मतलब इजी टू मीडियम ही था, तो ज्यादा हार्ड नहीं था, तो वो हो जाता है। Okay. Bhaiya, what reasons you mentioned for not making group projects? ग्रुप प्रोजेक्ट का मैंने बोला था कि अभी मैं ऑन द वे हूँ, मतलब एक प्रोजेक्ट मैं उस समय कर रहा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने बोला कि मैं कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया, क्योंकि उस समय मैं खुद सीख रहा था कुछ चीज़। जैसे उस समय मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, तो सब कुछ नहीं आता था, तो उस समय मैं ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं कर पाया। ये रीज़न बताया, तो उन्होंने बोला ठीक, आप नेक्स्ट टाइम से ग्रुप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना। तो मैंने वो बोला, तो मैंने उनको बताया भी कि मेरा करेंटली कौन सा ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो बोले कि ठीक है। तो वो कंप्लीट नहीं था, इसलिए मैंने उसे रिज्यूमे में नहीं डाला। One guy has asked non-CSIT, especially civil construction intern के लिए क्या करना होगा? उन्हें मतलब डीएसए करना होगा और प्रोजेक्ट अच्छा बनाना होगा। Basically, सब कंपनीज का सेम ही प्रिपरेशन होता है। हाँ, सब लोग सब में अप्लाई करते हैं, जिसमें हो जाता है उसमें हो जाता है, ऐसा ही सीन हाँ, रहता है। बस यही है कि प्रोजेक्ट को मतलब प्रायोरिटी ज्यादा दे रहा है। Okay. So
there are no more questions. If anyone have any questions regarding BB interns, so you can ask. CGPA criteria interns के लिए जीपीए 8 था probably 8 मतलब वो सीजीपीए मोस्टली ओए रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के लिए काम आता है मतलब स्टार्टिंग में जो ओए के लिए ओए resume लिंक आएगा उसमें. उसके लिए सीजीपीए थोड़ा मैटर करता है One guy has asked भैया किस टाइप का प्रोजेक्ट रहेगा तो एडवांटेज होगा. मतलब तुम्हारा मतलब जैसे हम लोग के इंटर्न में तो बहुत ये मतलब अलग अलग तरीके के लिए जैसे मैं किसी का एमएल का प्रोजेक्ट है तो वो एमएल वाले को भी लिया है जैसे मेरा वेब डेवलपमेंट का था तो मुझे भी लिया है तो अलग अलग प्रोजेक्ट रहेंगे लेकिन तुम खुद से भी किया होगा वो मैटर करता है मतलब वो तुम्हारा ये देखना चाह रहा है कि तुम सही से किया है कि नहीं. So I guess we don't have. No, we have one more question. What JavaScript might be asked? Like, are those DOM or output based? JavaScript, core JavaScript कुछ questions पूछे थे DB में. नहीं जावास्क्रिप्ट से तो हमसे क्वेश्चन नहीं तो वो बैकएंड के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन मतलब मेरा तो ये से मोंगोडीबी से मैंने कनेक्ट किया था तो उन्होंने हम मुझसे बोला कि अच्छा तुम मोंगोडीबी से कनेक्ट किया है तो तुमको एसक्यूएल पीएचपी भी थोड़ा मोड़ा आता होगा तो उन्होंने मेरा पूरा एसक्यूएल पीएचपी में पूरा कोड लिखवाया था कि कैसे कनेक्ट करोगे क्या करोगे और एसक्यूएल के थोड़े क्वेरी रन करवाए थे और सिंटैक्स कभी रॉन्ग मत करना है इंटरव्यूअर के सामने क्योंकि हर जो राउंड क्लियर होंगे ना तो वो राउंड के नीचे ना वो तुमसे सिंटैक्स लिखवाते हैं जैसे डीएसए में भी होगा कोड देंगे तुमको वो कोड तुमको लिखना पड़ेगा अगर तुम कोड में थोड़ा भी सिंटैक्स रॉन्ग करते हो तो वहाँ पर तुम्हारे नंबर कट जाते हैं वो हर इंटरव्यू राउंड के बाद है ना तुम्हारे नीचे में नंबर लिखाते हैं वो पेपर ऊपर जाते रहते हैं तो वहाँ पे सिंटैक्स मिस्टेक मत करना वो कोई ये हो जाता है Okay, so I guess there are no more questions. Would I say this like my XMAP में चलेगा? One guy has asked. I don't even know what this is. Do you guys have any idea? माय एक्समैप ने वो मोस्टली नॉर्मल से ये पूछा था कि तुम कैसे कनेक्ट करोगे और वो नॉर्मल से सिंटैक्स पूछा था कि कैसे क्या करोगे मतलब क्रिएट टेबल कैसे करोगे वो सब पूछा था मैं तो मोंगोडीबी से किया था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था मैंने उनको बोला भी तो उन्होंने बस बोला कि कैसे करोगे वो मेरे सिंटैक्स देखना चाह रहे थे कि तुम एसक्यूएल में कैसे करते हो क्या वो और कैसे कनेक्ट करते हो एक दूसरे पेज को बस. So you guys have any last final few words in your whole like journey from tracking over to getting offer? I would say be confident. This has been said before by our seniors, but be confident in the interview and be thorough with whatever you have written in your resume. शहनवाज ने बार बार बोला है कि कुछ भी अगर किसी में भी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वो रेज्यूमे में मत डालो और जो भी रेज्यूमे में है उसमें कॉन्फिडेंट रहो ठीक है और right or throughout the interview if you don't know anything ask them they will help you okay don't be like I don't know this and don't be get in your head ask talk it out loud they will want to know your approach when you're solving a problem and they will help you along the way so don't be afraid to ask the interviewer questions and in the HR round be strategic with your answers try to prepare answers beforehand so you don't flubber in the interview and yeah that's it. So thank you guys for spending your valuable time with us. This was really insightful and our juniors must have learned a lot of things from it. Now moving on to Deutsche Bank FTE. We have with us Ayush Bhaiya and Arindam Bhaiya. I'm also, yeah. Am I audible? Yeah. By the way, Ayush,
Ayush bhai, if you can please also put some light, though you have cracked it in intern and got an PP offer, but still we would love to hear from you. Yeah. So देख डीवी का थीम है. So Continue, next continue, slide. Arinda. So next slide में जा एक बार next slide. Bhai, DB please का. go to the next slide. Yeah. हाँ. So देख डीबी का टोटल 5 राउंड हुआ था FT सीजन के लिए. So the first round was the online assessment round. So there are 3 DSA questions were given there, and the platform was HackerArt, I think. Yeah, HackerArt, and the time was given 90 minutes total. And I can remember the questions like one was easy and one was medium and another one was hard. And medium question तुम लोगों को लीड कोड में ही मिल जाएगा. वो एक्चुअली वो वैलिडेट आईपी एड्रेस नाम का जो क्वेश्चन है वही आया था फर्स्ट राउंड का, मतलब जो ओए हुआ था उसमें. और बाकी उसके बाद सो नेक्स्ट स्लाइड में जा एक बार, वो बाकी इंटरव्यू राउंड्स के बारे में बोलते हैं. सो टोटल 4 इंटरव्यू राउंड्स हुआ था, शेड्यूल हुआ था इस ऑनलाइन असेसमेंट के बाद. और यहाँ पर सीजीपीए क्राइटेरिया उतना कुछ नहीं था. आई थिंक सब लोगों को ही आई थिंक ओए लिंक मिल गया था. और ये 3 जो क्वेश्चन था, हाँ, ये ओए असेसमेंट के बेसिस में ही वो बाकी सिलेक्शन हुआ था. रेज्यूमे भी आई थिंक उतना सिलेक्शन नहीं किया था. वो ऑनलाइन असेसमेंट सबको ही आई थिंक मिल गया था. Okay. So the technical interview rounds. So the first round was the technical round 1, then technical round 2, then co-fitness round, and another one was HR round. इंटर्न में एक ही टेक्निकल राउंड हुआ था, बट एफटी के लिए 2 टेक्निकल राउंड होता है इधर. सो इन टेक्निकल राउंड मेरा इंटरव्यू एक्चुअली जो था वो एक्चुअली सीटीओ था उस कंपनी का, डीबी का. सो मेरे को पहले पूछा एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट क्या बनाए थे. मैं एक्चुअली एक प्रोजेक्ट था जो एक्चुअली हैकाथन में बनाया था. तो वो पूछा कि हैकाथन में ये प्रोजेक्ट कैसे बनाए थे, टीम वर्क कैसे हुआ था, और व्हाट वाज द यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट, एंड ये सब पूछ रहा था. बाकी बोल रहा था कि कैसे तुम लोग कोलैबोरेट किए हो उस टाइम, ये सब पूछ रहा था. बाकी प्रोजेक्ट्स ही मेनली देख रहा था टेक्निकल राउंड्स में. और एक बात मैं बोलूंगा कि इधर हर एक चीज मतलब तुम्हारा देखेगा रिज्यूमे में जो भी लिखे हो. और वो एक चीज मैं नोटिस किया था डीबी में, वो एक्चुअली वो रिज्यूमे में वो हम लोग एक ऑफलाइन रिज्यूमे दिया था, मतलब हैंड एक मतलब एक प्रिंट आउट दिया था रिज्यूमे का. ये तो ऑफलाइन हुआ था, ऑनलाइन नहीं हुआ था. तो दैट टाइम वो एक्चुअली इंटरव्यूअर जो था वो एक्चुअली सब कुछ नोट कर रहा था कि ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन सा टीम वर्क किया था, और बहुत सारा सर्कल कर रहा था. जो नेक्स्ट इंटरव्यूअर भी वो सर्कल्स एक्चुअली देख सकता था. सो एक्चुअली इट विल आल्सो मार्क एक्चुअली ये नेक्स्ट राउंड में भी बहुत अच्छा हो रहा होता था. एक्चुअली फर्स्ट राउंड का इंटरव्यूअर मतलब कुछ बोल दे रहा है कि ये सब चीजें मैं देखा हूँ, ये सब चीजें इस बंदे का अच्छा है, तो ये सब चीजें थोड़ा मतलब मार्क कर रहा था उस रेज्यूमे पे भी. सो ये अच्छा था. और बाकी क्वेश्चंस डीएसए में बहुत ही इजी मतलब क्वेश्चन पूछता है. मैं बाकी बैंक्स में भी देखा हूँ, बैंक्स में आई थिंक इंटरव्यूज में जो होता है डीएसए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, लाइक मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा था. और बाकी डीएसए जो डेटा स्ट्रक्चर्स रहता है तो उसका रियल लाइफ एग्जांपल वो बहुत पूछा था. ये आई थिंक इंटर्न में भी पूछा था और एफटी में भी पूछा था बहुत सारा. अभी ये थोड़ा तुम लोग भी देख के जाना, लाइक नॉर्मली अगर तुम लोग को पूछता है कि स्टैक का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है तो तुम लोग तो वो बता देगा. बट बीएसटी का अगर तुम लोग बोलता है कि बीएसटी का इंटरव्यू बीएसटी का रियल लाइफ एग्जांपल क्या बोलेगा, तब तो तुम लोगों को भी मतलब सोचने पड़ जाएगा. तो ये सब थोड़ा अगर पहले से देख के जाओगे, पहले से सोच के जाओगे तो अच्छा होगा. हम लोग तो उस टाइम मतलब एट दैट पॉइंट सोच रहा था. तो ऐसा और एक भी हम लोग को पूछा था कि फिबोनाची सीक्वेंस का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है. तो ये सब मतलब थोड़ा वो देखेगा कि एक्चुअली कैसे तुम ये सारे टैकल करोगे ये सब क्वेश्चंस. ये सब मतलब सडनली तुमको कोई पूछेगा, सब लोगों को पूछता है फिबोनाची सीक्वेंस कोड करो, तुमको पूछ रहा है फिबोनाची सीक्वेंस का रियल लाइफ एग्जांपल, ये तुम क्या बताओगे उधर. तो ये थोड़ा मतलब सोचना पड़ता है. What did you answer on this? Did you ये remember? मैं एक थोड़ा बताया था डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ बहुत बताया था कि फिबोनाची सीक्वेंस एक्चुअली गोल्डन रेशियो में गया था. उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोले उधर भी. तो उसके बाद बताया कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो उस टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि
ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली फिबोनाची सीक्वेंस पे ओरिएंटेड है, ऐसा कुछ बोल दिया था। और बाकी डेटा स्ट्रक्चर तो गया, बाकी उप्स डीबीएमएस बेसिक ही क्वेश्चन पूछता है। डीबीएमएस में क्वेरीज बहुत सारा पूछा था, और उप्स में बेसिक ही वो जो बेसिक पिलर्स ऑफ उप्स ऐसा ही पूछा था। नॉर्मलाइजेशन आई थिंक पूछा था, और बाकी ओएस आई थिंक गया नहीं था फर्स्ट राउंड में, ओएस आई थिंक पूछा नहीं था। बाकी और अच्छा डीबीएमएस में बाकी एसक्यूएल क्वेरीज पूछा था, एंड बोला था कि तुम क्यों एसक्यूएल नहीं यूज किया, क्यों नोएसक्यूएल यूज किया, ऐसा कुछ बोलता है। ये नॉर्मली हर कोई इंटरव्यू में ही पूछता है, तो ये भी उधर पूछा था। और बाकी फर्स्ट राउंड के लास्ट में बोला था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था उधर। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछा था कि गिट वगैरह देख रहा था कि गिटहब ये सब लिखा हुआ था, कोलैबोरेशन में बहुत काम किया था हैकाथॉन में भी। तो बोला था कि गिट का आर्किटेक्चर बोलो, तो ये सब मतलब डायरेक्टली बोल देता है तुम तो गिट का आर्किटेक्चर ऐसा, तो तुम तो घबरा जाओगे कि गिट का आर्किटेक्चर क्या है। तो तुम थोड़ा अगर उधर एक्चुअली अप्रोच करते हो तो वो लोग भी हेल्प करता है, तो उतना परेशान नहीं होता। तो तुमको एक्चुअली ट्राई correct way, they will also pull you कि यस 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 एक्चुअली अगर तुमको पता ही नहीं है कि गिट का आर्किटेक्चर क्या है, बट तुम बोल सकते हो कि स्टेजिंग एरिया और बाकी जो गिट रिपोजिटरी एरिया है वो सब थोड़ा थोड़ा बताओ, तो वो लोग भी बोलेगा हाँ स्टेजिंग एरिया में क्या होता है, तो वो सब तुमको पूछेगा, तो तुम उधर आंसर कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि तुम एकदम रट के जाओगे तो तुमको वही आंसर करना पड़ेगा, तुम खुद से भी सोचो। तो ये डीबी में बहुत सारा देखा था, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था जो एक्चुअली तुमको उसी टाइम मतलब सोचना पड़ेगा। तो ये डीबी में देखा था बहुत। और बाकी फर्स्ट राउंड के हर एक इंटरव्यू के एंड में ये पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो आई विल सजेस्ट दैट एवरीवन शुड प्रिपेयर बिफोरहैंड दैट सम क्वेश्चंस फॉर दैट कंपनी। लाइक तुम कोई भी कंपनी में जा रहे हो तो उस कंपनी के बारे में तो थोड़ा बहुत देख के जाओगे कि उसके ऊपर पे क्या होता है। तो मे बी एक्चुअली दैट टाइम मेरे को क्वेश्चन याद है, मैं पूछा था डीबी उस इंटरव्यू में कि डीबी में आई एक्चुअली हर्ड दैट एट दैट टाइम डीबी वाज ऑन द माइग्रेशन फ्रॉम ऑन प्रेम सर्विस टू जीसीपी प्लेटफॉर्म। So I actually asked that question about that, and he was also impressed, and he also started talking with me also for 5 or 6 minutes more. So it was a very nice interview overall. एंड देन उसके बाद आधे घंटे 40 मिनट बाद नेक्स्ट इंटरव्यू का कॉल आया, तो उधर इंटरव्यू ऐसा हुआ था। फर्स्ट में आई थिंक वो डीएसए ही पूछ रहा था, बोला पहले ही कि बहुत बेसिक ही डीएसए पूछता है। तो मेरे को आई थिंक पूछा था कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन बताओ, और वो थोड़ा लिख के बताओ स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा ही कुछ बोला था। बाकी और एक दो बहुत ही इजी डीएसए क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद जम कर गया था आई थिंक पजल में। अच्छा, और कोई डीबीएमएस क्वेरीज भी पूछा था, बोला था मेरे को एक बार कि फायरबेस क्यों ये पार्ट यूज किए हो, इधर क्यों मोंगोडीबी यूज किए हो, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा रियल टाइम में बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा कुछ पूछा था। और बाकी मतलब सब प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बहुत चल रहा था। तो बाकी अच्छा बोला था ऑथेंटिकेशन कैसे इम्प्लीमेंट किए हो, फॉरवर्ड पासवर्ड कैसे इम्प्लीमेंट किए हो। एक्चुअली प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हुआ था, तो जिसका जैसा प्रोजेक्ट है तो उसका सही। अच्छा हाँ, ये सभी पूछा था। और एक्चुअली नॉर्मली तो सिस्टम डिजाइन पूछता नहीं है, बट मेरे को बोला था कि एक रफ एचएलडी ड्रॉ करो और बताओ कि तुम्हारा प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, तो ऐसा नॉर्मली पूछ सकता है। और बाकी डीबीएमएस आई थिंक सेकंड राउंड में पूछा था, बट ओएस आई थिंक डीबी में नहीं पूछा आई थिंक। बाकी ओएस नहीं पूछा। और बाकी उसके बाद पजल पूछा था। अच्छा, मेरे को याद है एक पजल, वो तुम लोग भी आई थिंक यूज देखे हो वो पजल, 4 ब्रिज ऐसा नाम है, जीएफजी में मिल जाएगा वो पजल। लाइक पजल में एक्चुअली तुम लोगों को बहुत लोग को ये एक्चुअली वो जीएफजी 100 पजल अगर करके जाओगे तो तुम लोगों को कॉमन मिल जाएगा, बट तुम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन में जंप नहीं करोगे। ये आई विल सजेस्ट दैट मे बी जंप डायरेक्टली सॉल्यूशन में जंप नहीं किया था, मेरे को आता था वो सोच कर हाँ सोच कर ही कर रहा था। थोड़ा ड्रामा भी करना कि थोड़ा सोच रहे हो, ऐसा थोड़ा करना। अरे अगर ऐसे ही आ जाता है कोई नया पजल तो फिर तो तुमको सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या खत्म। और नहीं तो अगर एकदम कड़ा हुआ ही क्वेश्चन आ गया फिर भी थोड़ा ड्रामा करना। लाइक मेरा टाइम पे जो 4 ब्रिज का क्वेश्चन था, आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल यू गाइस नो, लाइक एक मेरे को ऐसा बोल रहा था कि एक ब्रिज है, सो इस ब्रिज के अंदर 4 तुम्हारा दोस्त है,
और तुम्हारे पास एक रात का अंधेरा है, तो उस टाइम तुम्हारे पास एक टॉर्च है, तो तुम इस पार से उस पार जाओगे, तो कैसे जाओगे तुम लोग, कितना टाइम पे जाओगे? एक बंदे का टाइम लगता है 1 सेकंड, एक बंदे का टाइम लगता है 2 सेकंड, ऐसा कुछ बोला था। तो बोला था कि शॉर्टेस्ट कितना टाइम पे तुम चारों बंदे इधर से उधर चला जाओगे। तो इसका आंसर एट दैट टाइम द आंसर वाज एक्चुअली 17, बट वो एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, मेरे को बोला नहीं था कि टोटल एक्चुअली क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, तो मैं डायरेक्टली बोल दिया था 10 मिनट में पहुंच जाएगा, 10 सेकंड में पहुंच जाएगा। एक्चुअली इसका आंसर 17 सेकंड होता था। तो उस इंटरव्यू भी चौंक गया कि 17 सेकंड आंसर है, 10 सेकंड में इससे भी मिनिमम टाइम में कैसे जाएगा। तो मैं बोला कि एक्चुअली उसमें क्वेश्चन में एक चीज उन लोगों ने बोला नहीं था कि एट ए टाइम 2 लोग वो रिवर क्रॉस कर सकता है। तो मैं बोला 4 लोग ही एक साथ क्रॉस कर जाएगा, तो 10 मिनट में 4 लोग ही पहुंच जाएगा, तो ये बताया था। तो इससे उन लोगों को भी एक्चुअली आइडिया हो गया कि ये बंदा रट के नहीं आया, कि एक्चुअली देख के नहीं आया। तो उसको समझ में आ गया कि ये मैं ही क्वेश्चन गलत बोला, तो मेरे को ही क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। तो वो उसके बाद बोला नहीं नहीं, 1 मिनट में एट ए टाइम एक्चुअली 2 ही बंदा जा सकता है। तो उसके बाद मैं सोचने लगा। तो ऐसा थोड़ा करना, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप मत करना, जैसे नॉर्मली डीएसए में भी करते हो, डायरेक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जंप नहीं करना, पहले थोड़ा ब्रूट में जाना, उसके बाद ऑप्टिमल में ट्राई करना। सो वैसा ही करना इधर भी। बाकी सेकंड राउंड में ऐसा गया था। उसके बाद थर्ड राउंड जो हुआ था वो प्रॉफिटनेस राउंड हुआ। उस प्रॉफिटनेस राउंड एक्चुअली मोर लाइकली एचआर राउंड। देयर इंटर्न्स में भी जो वो लोग बोला कि एक प्रोजेक्ट डिप्लॉयबल रहना होगा, जो एक्चुअली वो लोग देखना चाह रहा था उन लोगों का मोबाइल और लैपटॉप में। सो मेरे को भी पूछा था कि तुम्हारा कोई भी एक वेबसाइट बोलो जो मैं और मेरा मोबाइल में खुल के दिखाओ। तो मेरा एक्चुअली उस टाइम सृजन जो है कॉलेज का टेक फेस्ट, तो सृजन का वेबसाइट मेरा प्रोजेक्ट में था। तो मैं बोल दिया उनको कि गूगल में सृजन स्पेस जेयू लिखो, वो वेबसाइट जो वेबसाइट आएगा पहले, तो वही एक्चुअली है मेरा प्रोजेक्ट। तो वो खोल दिया, तो पहले में ही आ गया, मतलब सृजन जेयू। तो वो भी इम्प्रेस हुआ। तो उसके बाद उसके बारे में ही पूछा। वो एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उसके बारे में ही बोलते रहा कि इस प्रोजेक्ट पे क्या हो रहा है। और बाकी इस राउंड में एक्चुअली तुमको पूछता है कि मैनेजमेंट टाइप का ही क्वेश्चन एक्चुअली पूछता है। तो मेरे को पूछा था कि तुम इधर टेक स्टैक जो यूज किए थे ये सृजन जो वेबसाइट में, अगर तुमको थोड़ा फंड मिलता और थोड़ा पैसा दे देता, तो तुम कैसे, मतलब तुम्हारा टेक स्टैक चेंज करते, तुम क्या AWS में जंप करते, थोड़ा कैसा मतलब अप्रोच करते। तो वो सब मेरे को पूछा था। तो मैं उधर एक्चुअली बोल रहा था कि कैसे मैं कॉस्ट कटिंग करता, तो ये सब बता रहा था। बाकी इस राउंड में और भी कोई क्वेश्चंस पूछता है कि बिहेवियरल बेस्ड, लाइक बोला कि तुम्हारा टीम में तुम्हारे साथ बाकी दोस्त का बन नहीं रहा, बाकी टीम तुमसे हेल्प मांग रहा है बट हेल्प नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे तुम एक्चुअली कैसे रिएक्ट करोगे। तो ये सब बहुत पूछता है। और एक बात मैं बोलूंगा कि कोई भी बैंक्स में और एनी कंपनीज में ही आई थिंक ये बात पूछेगा कि हायर स्टडीज का कोई इंटरेस्ट है। तो हायर स्टडीज अगर पूछता है, तो अगर तुम्हारा हायर स्टडीज का सच में इंटरेस्ट है, तो तुम कंपनीज में मत बैठो, यही आई विल सजेस्ट। क्योंकि बेकार में तुम एक्चुअली एक कंपनी में सीट वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम जब बोलोगे भी कि तुम्हारा हायर स्टडीज का इंटरेस्ट है, तो वो लोग भी डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है, एक्चुअली नॉर्मली और रिजेक्ट ही कर देता है। तो yeah, I will suggest if you want to go for higher studies, प्लीज मतलब सीट छोड़ ही दो वो सीट। और नहीं तो मत बोलना कभी भी, भूल कर भी मत बोलना कि बाद में हायर स्टडीज का कोई शौक है। हमारा भी बहुत बार पूछ रहा था कि कोई हायर स्टडीज का शौक है, तो मैं बार बार बोल रहा था कि मेरा कोई शौक नहीं है हायर स्टडीज का। तो ऐसे बोलना पड़ता है ये सब। और मेरा ऐसे भी कोई शौक नहीं है हायर स्टडीज का। और बाकी थर्ड राउंड ऐसे ही गया था। और बोला था भाई एक्चुअली यू आर वांटिंग टू कमिंग इन टीपी, ये सब पूछा था। और उसके बाद फाइनल राउंड जो हुआ था वो एचआर राउंड हुआ था, वो 20 मिनट का चला था। वो हायरिंग उधर एचआर राउंड आई थिंक ऑनलाइन हुआ था। हाँ, एचआर राउंड ऑनलाइन हुआ था, बाकी जो राउंड 3 राउंड हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था। एचआर राउंड जो हुआ था वो उधर ही टेक्यूब में बैठ के ही हम लोग ऑनलाइन में दे रहे थे, जूम मीटिंग में आई थिंक। तो जूम मीटिंग में वो एचआर बहुत ही मतलब ठीक ठाक पूछ रहा था। और एचआर राउंड में जो जितने लोगों का भी गया था, हम लोगों में से आई थिंक हम लोग 6 गया था एचआर राउंड देने, और 6 लोगों का ही प्लेस हो गया था। तो एचआर राउंड में उतना कुछ देखा नहीं था, बट एक्चुअली एचआर राउंड में भी
कटिंग होता है, मतलब वो भी हम लोगों को भी बोला था कि 5 लोग को लेगा, बट अल्टीमेटली 6 लोगों को ही ले लिया था, तो ये अच्छा है। और ऐसे ही पूछ रहा था एच राउंड में कि ये तुम्हारा व्हाई एक्चुअली यू आर वांटिंग टू कमिंग इन टीपी, एंड ऐसा पूछ रहा था कि तुम्हारा हॉबीज क्या है, क्या मूवीज देखते हो, लास्ट कौन सा मूवी देखे हो, ऐसा कुछ पूछा था। तो बहुत अच्छा गया था बाकी सब ये सब। और इंटरव्यू देख के भी मतलब सेटिस्फेक्शन आया था, मतलब ठीक ठाक लगा था सब कुछ ही। अच्छा, और एक बात, ओए में भी मैं एक बात बोलूंगा, ऑनलाइन असेसमेंट जो हुआ था, बहुत कंपनीज में ये प्रॉब्लम होता है कि मतलब ऑनलाइन कंपाइलर नहीं चल रहा है, एडिटर नहीं काम कर रहा ठीक से, बट डीबी का ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्योंकि वो हैकरहाट में चल रहा था, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम्स तुम लोगों को भी देखने को नहीं मिलेगा। Okay. So like आयुष now, कुछ बोलेगा? now I would request Ayush Bhaiya to sum up the whole journey of getting intern and turning it into PPO, converting it into PPO. So if you can say something in brief, just. Yeah, sure. So देखो मतलब चीजें तो सेम ही था मोर और लेस, बस मेरा थोड़ा सा क्या डिफरेंट हुआ था। इफ आई स्टार्ट विद द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो for me the thing was my first round was completely it is a general trend from all of you what I heard, that the level of DSA which was asked in the interview was more of like easy to medium level, and I also agree with that. Okay, क्योंकि मैं जब intern करने गया था, I heard experiences from others also, from other colleges also, तो same ही रहता है चीजें कि बहुत इजी, मतलब बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। इवन आई हर्ड सम इंटरव्यूज, पुणे का कोई कॉलेज में था, वहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस वगैरह ही पूछा था मैक्सिमम, तो दैट इज लाइक वेरी इजी। लेकिन मेरा थोड़ा सा रेज्यूमे अलग था क्योंकि आई वाज मतलब सेकेंड ईयर तक आई वाज मोर इनटू सीपी रादर देन डेव एंड ऑल दैट। तो as far as I remember, I was around like 1500 rated on code forces. So and उस साल मैंने ICPC में भी शायद 200 something around rank अचीव किया था। So I mentioned that in resume, and तो ये मेरे को एक सीनियर ने भी बोला था, I don't remember the name exactly. I guess प्रियम भैया ही नहीं बोला होगा कि अगर if you are mentioning CP in your resume, तो तुम्हारा level of questions increase होगा। तो यस आई फेस दैट सिचुएशन, क्योंकि मैं जब भी बोला था ये वाला चीज, तो मेरा क्वेश्चन जो था वो डीपी प्लस ग्राफ का एक मतलब वेरिएशन टाइप क्वेश्चन था। वो बाद में आई फाउंड आउट कि आई सॉल्व दैट क्वेश्चन बिफोर ऑन कोड फोर्सेस, इट वाज समथिंग अराउंड 1500 to 1600 रेटेड, तो मतलब वेरिएशन था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं था। तो टेक्निकल राउंड 1 में तो ये वाला डिफरेंस आया था थोड़ा सा, और उसके बाद आई हैड अ वेरी बेसिक प्रोजेक्ट, लाइक तुम लोग सब मतलब जो लोग आता है जूनियर लोग सभी लोग वो करता है, पाथ फाइंडिंग विजुअलाइजर, तो मेरा तब वो वाला ही प्रोजेक्ट था। तो उसके बारे में कोई बैक कर रहे हैं मतलब, हाँ प्रोजेक्ट भी डीएसए को ही बैक कर रहा है एग्जैक्टली। तो द इंटरव्यूअर डायरेक्टली आस्क मी, तो वो प्रोजेक्ट में सीधा कुछ भी नहीं घुसा था, वो बोला था कि कौन कौन सा एल्गोरिथम्स यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। तो मैंने बोला ये एल्गोरिथम्स यूज किया है, ग्राफ एल्गोरिथम्स। तो उसने सीधा पूछा, जब मैंने एक एल्गोरिथम का नाम लिया ए स्टार सर्च, सो आई गेस ही थॉट दैट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है, मैंने बस छाप के दे दिया है वो वाला चीज। तो ही डायरेक्टली आस्क मी टू राइट द कोड फॉर ए स्टार एल्गोरिथम। तो या बिकॉज वी हैड अ लाइक आई हैड implemented it previously, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था ये सब सर्चिंग एल्गोरिथम्स में। एआई का भी, ये एआई के अंडर आता है बेसिकली, इट इज अ ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम। तो या आई implemented that and he was very much impressed, like I know these two things, लाइक मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक मिला था उसके बाद। तो यही मेरा मेजर इंटरव्यू था, टेक्निकल राउंड 1। रेस्ट मेरे को थोड़ा बहुत मतलब जावा का क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरनल चीज है, क्योंकि मैं काम करके आया हूँ वहां पे। तो डीबी प्रीडोमिनेटली वर्क्स ऑन स्प्रिंग बूट, तो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क पे उन लोगों का मैक्सिमम काम होता है, मैक्सिमम टीम्स काम करता है, एंड पाइथन इज आल्सो देयर इन सम टीम्स। तो यूजुअली जो नोड एक्सप्रेस करता है लोग, तो उसमें थोड़ा सा कम ही काम होता है यूजुअली। तो इंटरव्यू में अगर किसी का जावा बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो यू आर गेटिंग एन एज फॉर श्योर, क्योंकि इंटरव्यूअर के साथ तुम्हारा वो होता है ना कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बैठ जाता है, सिनर्जी बहुत अच्छा बैठ जाता है। तो यही था, और कुछ मतलब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस था, इजी था, मतलब उतना टफ कुछ नहीं था कि ये वाला कुछ सिचुएशन दे दिया था, उसके बाद बोला था इसमें क्या चीज यूज करोगे, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो व्हाई आई वुड यूज इंटरफेस इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सब मतलब थोड़ा बहुत था। एंड रेस्ट तो बाकी तो यही गया था। हाँ, वन थिंग आई रिमेम्बर, लास्ट में एकदम मेरे से एक चीज पूछा था कि आर यू फेमिलियर विथ लो लेवल डिजाइन समथिंग, तो मैं बस मतलब
तब तो ज्यादा नहीं, एकदम ही मैं 3-4 डिजाइन पैटर्न्स जानता था, तो मैंने वही बोल दिया कि मेरे को ये डिजाइन पैटर्न्स आता है। तो मेरे को 2 ठो डिजाइन पैटर्न वो एक्सप्लेन करने बोला था जो मेरे को पता था। तो आई एक्सप्लेन द सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न एंड ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न। एंड बिल्डर भी पूछा था, लेकिन आई वाज नॉट मच कंफर्टेबल इन बिल्डर पैटर्न, तो मैंने बोला नहीं पता है वो वाला। तो दिस वाज ओवरऑल टेक्निकल राउंड 1 एक्सपीरियंस। टेक्निकल राउंड 2 में सेम था जैसा, सॉरी नॉट टेक्निकल राउंड 2, आई गेस इट वाज प्रो फिटनेस राउंड। तो प्रो फिटनेस में लाइक मेरा बहुत शॉर्ट हुआ था, 20 to 25 मिनट्स। तो यहाँ पे पीपीटी में आई एम सीइंग 50 मिनट्स लिखा हुआ है, तो मेरा वो वाला हाँ like for like intern वाला अलग है। हाँ, इंटर्न वाला अलग है, ओके। तो मेरा बहुत शॉर्ट हुआ था, वो 25 मिनट्स का ही हुआ था। तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो था, पहले तो एकदम सेम कि कुछ तुम्हारा प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो डिप्लॉयड होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो मेरा भी वही हुआ, सेम डिस्कशन स्टार्ट हुआ, देन द डिस्कशन मूव स्लोली एंड स्लोली इनटू जावास्क्रिप्ट, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट वगैरह वगैरह ये सब। देन वेरी बेसिक लाइक डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस कि एरे और लिंक लिस्ट का डिफरेंस क्या है, कौन सा स्पेस ऑप्टिमाइज्ड है, कौन सा क्या नहीं है, कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन हर एक चीज का, and something around time complexity, space complexity, and 2 questions I remember from the second round which were like technical questions which were good. One of them involved the like मेरे को interviewer पूछा था कि I cannot see any full stack project on your resume. तो मैंने बोला, उसको justify किया कि I was not into dev actually. तो मैंने मेरा college time entirely CP पे ही devote किया है। तो वो पूछा मेरे को कि do you know anything about backend development? तो मैंने कहा yes I know but I haven't implemented anything on hands on. तो ठीक है, उसने बोला कि मैं तुम्हें एक situation देता हूँ कि अगर तुम्हारा कुछ सर्विस चल रहा है, वो सर्विस डीबी को हिट कर रहा है, तो फेलियर्स हो रहा है बहुत सारा, कनेक्शन टाइम आउट लाइक हो रहा है, तो तुम वो वाला चीज को कैसे अवॉइड करोगे? तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई लाइक मैंने कुछ पढ़ा था, मीडियम आर्टिकल्स वगैरह कुछ पढ़ा था उससे पहले कनेक्शन पूलिंग के बारे में। तो आई टोल्ड देम अबाउट कनेक्शन पूलिंग कि हम लोग एक कनेक्शन पूल मेंटेन कर सकते हैं, जितना मेरा कॉन्करेंट कनेक्शंस ले सकता है टीसीपी कनेक्शंस, तो उस तरीके से हम लोग जो कनेक्शन मेरा रीयूज हो रहा है उसको हम कनेक्शन पूल में डाल देते हैं वापस, जो रीयूज करने के लिए बार बार, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू टीसीपी कनेक्शन। तो यही एक अच्छा क्वेश्चन था एज फार एज आई रिमेम्बर। बाकी तो डीबीएमएस का बहुत सारा बेसिक क्वेश्चंस लाइक फर्स्ट सेकंड लेवल नॉर्मलाइजेशन एंड कुछ एसक्यूएल क्वेरी तो मेरे को कुछ नहीं पूछा था, लाइक सम ऑफ यू टोल्ड एसक्यूएल क्वेरी। There is one question, भैया, is that observer design pattern that of concrete subject, concrete observer class and dependency? One guy has asked this question. No. Okay. Observer design pattern is not like that. Observer is like तो वेब सॉकेट्स में जो होता है ना, that is only observer design pattern actually में। Okay. Yeah, so this was the thing and बाकी तो बहुत इजी गया था, उतना कुछ पूछा नहीं था। एंड देन डायरेक्टली एचआर राउंड में तो मेरा नहीं आया था, बहुत स्टोरी है, मतलब इंटरनल जो लोग था उन लोगों को पता है। तो 4 CSE guys were selected first of all and then suddenly the team came and removed one of them and मेरा एचआर अचानक से हो गया था। एंड बस एचआर राउंड में तो नॉर्मल क्वेश्चंस था। वन क्वेश्चन वाज देयर दैट एक्सप्लेन योर टेक्निकल प्रोजेक्ट्स टू अ 5 year old, यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ 5 year old kid। तो एचआर को मेरे को एकदम वैसे एक्सप्लेन करने बोला था। एंड हाँ, प्रो फिटनेस में ना कुछ नॉन टेक क्वेश्चंस पूछा था, बहुत सारा वियर्ड क्वेश्चंस पूछा था। लाइक आई रिमेम्बर वन, लाइक he told me, the interviewer told me that where do you live and why do you live there? So मतलब ये बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है। तो आई वाज लाइक व्हाट टू, क्या आंसर करे भाई इसमें। तो मैंने बस नॉर्मल सा लॉजिक लगा के बोला कि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है यहाँ से, मैं जहाँ पे रहता हूँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। तो यही सब कुछ, मतलब दिस वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग इंटरव्यू। एंड इंटर्न में जाके तो I would love to ask this question. How did you convert your intern offer into a PPO? यार बैंक में बहुत इजी रहता है एक्चुअली में। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, दोज हु आर लाइक appearing for any bank, maybe it Wells Fargo, DB तो लाइक बहुत ज्यादा है कन्वर्शन रेट। ठीक है, हम लोग का साल में I guess DB was the only company which gave 97% शायद conversion rate, if I'm not wrong. तो they took around roughly 500 something odd interns and सभी का हो गया था। मतलब बहुत ज्यादा अगर किसी ने छेड़छाड़ी नहीं किया होगा मैनेजर वगैरह के साथ, तो सभी का पीपीओ लग गया होगा। तो ज्यादा नहीं रहता, बस यू हैव टू लाइक डू द टास्क व्हिच आर असाइन्ड टू यू
प्रॉपर्ली, मतलब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी दिखाना पड़ता है कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। एंड टेक स्टैक का तो यार एक एडवांटेज रहता है थोड़ा, कि मेरे को जैसे कुछ नहीं आता था, ठीक है, व्हेन आई वेंट इनटू डीबी, तो मेरे को पूरा स्क्रैच से ही लर्न करना पड़ा। सो माय फ्रंट एंड टेक स्टैक वाज एंगुलर एंड बैक एंड वाज स्प्रिंग बूट। तो कुछ कुछ मेरा दोस्त लोग का था, उन लोगों का भी मेनली जावा में ही था, लेकिन आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग इंटर्न, क्योंकि मैंने बहुत मतलब ब्रेथ कवर किया ड्यूरिंग इंटर्न। तो फ्रंट एंड, बैक एंड, इवन टेस्टिंग में भी काम किया है। शुरू में फ्रंट एंड में एंगुलर में जैस्मिन फ्रेमवर्क, देयर इज समथिंग कॉल्ड जैस्मिन फ्रेमवर्क, तो उसमें कंपोनेंट्स का टेस्टिंग करना पड़ा था वगैरह। तो मेरा टेस्टिंग से ही स्टार्ट हुआ था, then slowly and slowly I moved to front end and then back end. So this was the thing internally. Okay, so I would like to move on to the final tips which you guys would love to give to our audience. Kunala, please change the slide. Yeah. फाइनल टिप फ्रॉम माय साइड वुड बी दैट डीएसए पे ज्यादा फोकस तो मत करो डीबी के लिए, क्योंकि बहुत इजी पूछता है, ठीक है। एंड समथिंग इंटरनल चीज जो मैं देख के आया हूँ, मैं तुम लोगों को एक बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा जो मेंटर था, व्हेन आई वाज इन माय लास्ट और सेकंड लास्ट वीक एज फार एज आई रिमेम्बर, तो उन लोगों का प्लेसमेंट सीजन चालू हुआ था तभी। तो कुछ कॉलेजेस में विजिट कर रहा था वो एज एन सीनियर इंटरव्यूअर। तो यहाँ पे डीबी में जैसे 5 लेवल्स होता है, तो इफ यू आर अराउंड समथिंग एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट लेवल, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू टेक द प्रोफेशनल फिटनेस राउंड। अदरवाइज उससे लोअर लेवल जो होता है वो ये राउंड लेता है, पिछला वाला राउंड लेता है। तो आई आस्क्ड वन डे गोइंग, वी वेर इन अ लिफ्ट, आई आस्क्ड कि सर क्या क्या पूछा आपने इंटरव्यू में जाके। तो ही टोल्ड मी दैट ही आस्क्ड अबाउट डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो मैंने पूछा डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्या क्वेश्चन पूछा। तो ही सेड कि मतलब आई डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन एक्चुअली, बट आई आस्क्ड व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड what can be the real life implementation of it. So rather than asking a question, he asked about the concept actually. तो यही होता है जब तुम बहुत सीनियर लेवल पे चले जाते हो, एक्चुअली 8 years 10 years प्लस एक्सपीरियंस हो जाता है, तो थिंग्स ना रिवॉल्व अराउंड like real world concepts rather than data structures and algorithms, to be really honest. तो तुम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि मैं लिट कोड का इतना सारा क्वेश्चंस करूंगा तभी मेरा like Basically, the इंटर्न लगेगा। philosophy of that thing, like if you don't हाँ use हाँ, it fast, you are condemned to repeat it. Basically, the philosophy of the thing, right? या सो यही मतलब एक टिप रहेगा मेरा, फॉर एनी बैंक आई गेस यू शुड फोकस मोर ऑन प्रोजेक्ट्स एंड सीएस फंडामेंटल्स। लाइक ये क्योंकि मेरे को डिजाइन पैटर्न्स के बारे में एक जन ने क्वेश्चन भी किया था, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ अभी मेरे पास क्लियर है ये वाला चीज कि मेरे को क्यों पूछा गया था। क्योंकि इन स्प्रिंग बूट, मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा बोलने से, मतलब सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्प्रिंग बूट में। तो और एंगुलर में भी, जैसे फ्रंट एंड में एंगुलर में बहुत सारा टीम्स काम करता है, तो जो स्टेट मैनेजमेंट होता है, वन ऑफ द वेज ऑफ स्टेट मैनेजमेंट इज यूजिंग सर्विसेज इन एंगुलर। तो सर्विसेज में जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो एक्चुअली सिंगल टोन ऑब्जेक्ट्स ही होता है। दैट्स व्हाई ही आस्क्ड मी अबाउट सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न। तो अब मेरे पास ये वाला चीज क्लियर हुआ है, क्योंकि वो उस चीज पे, वो बंदा उस चीज पे काम कर रहा है एंड ही इज विलिंग टू आस्क दैट ओनली टू यू। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स रादर देन डीएसए। मतलब डीएसए करना है ऐसा नहीं है कि नहीं करना, लेकिन बहुत इजी पूछता है वो, मतलब कवर अप हो जाएगा। और इन दम anything you want to add? So I will also suggest that thing, and one thing I will suggest that normally interview के लिए तो DSA लग नहीं रहा, but OA के लिए it is must, मतलब DSA एक्चुअली इंटरव्यूज के मतलब शॉर्ट लिस्ट भी बहुत कम करता है। मतलब ऑनलाइन असेसमेंट के बाद ऑनलाइन असेसमेंट देता है सपोज 150 एंड शॉर्टलिस्ट करते हैं 20 लोग को, तो मतलब बहुत ही कम शॉर्टलिस्ट करता है। तो डीएसए तब मतलब बहुत ही फैक्टर करता है। एक्चुअली डी में यही करता है कि पहले ही वो लोग शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं डीएसए स्किल्स, एंड उसके बाद और इंटरव्यूज में उतना वो लोग देखते नहीं है डीएसए। और बाकी आई विल सजेस्ट फॉर टिप्स लाइक you will actually beforehand तुम लोग थोड़ा वो हर एक डीएसए स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का रियल लाइफ एग्जांपल देख के जाओ, और जो भी प्रोजेक्ट है अच्छे से मतलब समझ के जाना। अगर बहुत दिन पहले बनाया हो तो भूल गया कि कौन सा किधर क्या इम्प्लीमेंट किया था, कैसे इम्प्लीमेंट किया था, तो वो हर एक चीज पूछेगा, तो वो अच्छे से देख के जाना। और प्रोजेक्ट्स में फुल स्टैक प्रोजेक्ट रखने का ट्राई करो, नहीं तो प्रॉब्लम होता है थोड़ा। और बाकी पास्ट इंटर्नशिप उतना देख नहीं रहा था। हाँ, मेरा तो इंटर्नशिप नहीं था ऑन कैंपस इंटर्नशिप कोई, तो मेरे भी उतना मतलब उतना देखता नहीं है। पास्ट इंटर्नशिप ठीक है,
बाकी प्रोजेक्ट्स तो दे दिया और पजल्स देख के जाना, पजल्स वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एंड जावा से यार एक एज मिलता है, ठीक है, मतलब बहुत सैड फैक्ट है, जावा से तुम लोगों को एक एज मिलेगा व्हेन इफ यू आर सिटिंग फॉर डीबी, तो जावा का थोड़ा सा अगर हो सके तो प्रिपेयर करके जाना। बाकी बैंक्स में भी आई गेस सब जावा में ही काम करते हैं ज्यादा, तो जावा देख के जाना बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी बैंक्स में भी मैं देखा था यही, सब जगह मतलब सब सारे बैंक्स में जावा में ही काम ज्यादा होता है। Okay. These are the suggestions. Okay. Is there any questions? It is too late. Like, I'm still surprised 37 people are still sticking. Okay. So I think we should conclude now. If you have any more questions, you can please, you are free to ask. One guy is asking, I know Java, but I don't know about its applications, but making Android apps. चलेगा यार, मतलब अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब तुम लोगों को Projects. लाइक जो टेक स्टैक है उसमें ही प्रोजेक्ट बनाना होगा, दैट इज नॉट द थिंग। यू शुड नो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसे एंड्रॉइड में काम कर रहे हो, यू विल बी लाइक वेरी मच एक्वेंटेड विद थिंग्स लाइक इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, कैसे काम करता है, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो जावा का थोड़ा इंटरनलाइज कंसेप्ट जो होता है उसको देख लो, एंड नॉट नेसेसरी, मतलब मैं बोल रहा हूँ एडेड एज मिलेगा ये जो लोग स्पेसिफिकली फॉर सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर गाइस। आई गेस उसका क्वेश्चन करने का मतलब ये था कि मेरे को जावा तो आता है, लेकिन जावा का क्या क्या एप्लीकेशन है वो मुझे पता नहीं है। लाइक आई वुड लव टू आंसर दैट जावा बैकएंड में भी यूज होता है। ठीक है, थोड़ा तो अभी मतलब आता है जावा, तो उससे भी थोड़ा तो एज मिलेगा ही। हाँ हाँ। एंड्रॉइड डेव तो होना नहीं चाहिए स्प्रिंग के लिए, तो एंड्रॉइड डेव ही होना। स्प्रिंग तो जस्ट बैकएंड फ्रेमवर्क है, तो ये सब सीख ही सकता है। हाउ मतलब SQL manipulations. वो तो तुम एंड्रॉइड डेव क्यों, मतलब वो तो तुम बाकी कोई भी एप्लीकेशन में ही कर सकते हो ना एसक्यूएल मैनिपुलेशन। One guy is asking, भैया ML या वेब डेव और उनकी प्रोजेक्ट्स उसमें कोई प्रेफरेंस देता है क्या कंपनी? लाइक वेब डेव को ज्यादा प्रेफरेंस दिया था ML. Like he is asking वेब डेव में थोड़ा see the questions গুলো কোথায় আসছে? वो यूट्यूबर सेशन का। Okay. I'm thinking from where the questions are coming. Question. What was the question? भैया ML या वेब डेव और उनकी प्रोजेक्ट्स उसमें कोई प्रेफरेंस देता है क्या कंपनी? लाइक वेब डेव को ज्यादा प्रेफरेंस दिया था ML. एक स्पेसिफिक केस बोल सकता हूँ, नाम तो चलो रिवील नहीं करते। तो उसका इंटर्नशिप था स्पेसिफिकली ML पे ही। तो जो बंदा था वो बहुत ही लाइक हम लोगों का ही पास आउट था, IT 20 बैच इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका इंटरव्यूअर वही था, लेकिन ही डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट ही हैड अ project on ML actually and not any significant project on specifically backend engineering and stuff. So थोड़ा सा देख लो। Actually पता है ये सीन इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर डिपेंड करता है यूजुअली, तो ऐसा जेनरिक नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होता है। ऐसे इंटर्न के लिए वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ईमेल उतना देखता नहीं है, बट एफटी के लिए सिर्फ डीबी नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों को आई थिंक मतलब ईमेल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि एफटी में बहुत सारा कंपनीज आता है जहाँ पर रोल ही होता है ईमेल रोल, तो उधर तुम लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर ईमेल नहीं जानते हो तो आई वुड सजेस्ट दैट ईमेल अभी एफटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। If there are any more questions, feel free to ask in the chat box. I think you can wrap.
Okay, I guess. We can conclude. It's too late. Thank you, Arindam Bhaiya and Ayush Bhaiya, for your valuable time. We really got some great insights from you guys. So, and I would love to announce one thing. We are coming soon, again, sooner than you expect, with a session of screening test. How और एक क्वेश्चन, डीबी में जाने के लिए ब्रांच मैटर करता है क्या? Sadly, yes. Sadly, yes. I guess you heard your answer. So yeah. So where I was talking about, yeah. So we will organize a session regarding screening test, we will conduct it, and how you should prepare for it. So stay tuned with us. We'll notify you. Okay. So yeah, let's conclude. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Chalo.